माननीय सभापति जी। Honorable members, please take your seat. Honorable members, what we were discussing in the prelim session, I have had interaction with some of the honorable members and leaders, and also with Mr. Derek O'Brien. There is quite as to the issue. We will move ahead, indicating our full commitment that our productivity must be known to the people at large, and we exemplify our conduct by best traditions of the House. Sir, thank you very much, sir. You're very large-hearted. The Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, Shri Rajnath Singh to move a motion for consideration of the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023. Let me tell you, a second. Honorable Defense Minister, one second. Honorable Defense Minister is known all over the world and in India as Defense Minister of Bharat. Therefore, he comes from UP is fine, sir, but people in Rajasthan, including me, love and respect you as much as others do. Okay. अनुरोध कर रहे हैं, एक तो आपकी सुगमता के लिए धन्यवाद, मिस्टर प्रमोद तिवारी, लेकिन आज आप पक्षपात कर रहे हैं। जयराम रमेश जी ने जिस आग्रह को किया आपने स्वीकार कर लिया, और हम सब पूरा सदन प्रयास कर रहा है कि मणिपुर जल रहा है, उस पर आप चर्चा हो जाए। आप तो शायद चाहते ये नहीं चाहते मणिपुर के नीचे तो बात बोलिए सर, अगर मणिपुर पे चर्चा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी, अन्यथा फिर हम सब मिलकर वॉकआउट करते हैं। सर, आप मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं सर। Nothing will go on record. Nothing will. आप मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, इसीलिए आप वॉकआउट कर रहे हैं। श्री प्रधानमंत्री सदन में आओ। Shri Rajnath Singh to move a motion for consideration of the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को माननीय सदस्यों के बीच रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सभापति महोदय, जैसा कि सदन को विदित है कि वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाओं का सशक्त होना यह आवश्यक है। तो अपनी सेनाओं को सशक्त करने की दृष्टि से ही यह बिल लाया गया है। बेहतर ज्वाइंटनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी बेहतर होना चाहिए, और हमारी सेनाएं वांछित जो परिणाम हैं उनको हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके, यह इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल व इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ही यह बिल लाया गया है। लोकसभा द्वारा इस बिल को विचार करने के बाद पारित किया गया है, और माननीय सभापति महोदय, जब भी कोई राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है तो समय की मांग के अनुसार उसे अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी करने की जरूरत होती है। कानूनों के संबंध में भी मैं यह मानता हूं कि यही बात पूरी तरह से लागू होती है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश की प्रगति में बाधा डाल रहे बहुत सारे पुराने कानूनों को रद्द किया है, और कुछ ऐसे कानून हैं जिन कानूनों में उन्होंने संशोधन किया है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया
या इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उन्हीं प्रयासों का एक अहम हिस्सा है। और इस बिल का उद्देश्य हमारे सैन्य बलों में निहित अनुशासन की महान परंपरा को और मजबूती दे देना है। और यह अनुशासन ही है जो हमारे सैनिकों के अंदर न सिर्फ एक आत्मविश्वास ही पैदा करता है, बल्कि एक यूनिट या इस्टेब्लिशमेंट के रूप में उनके अंदर एकता की भावना को भी मजबूत करता है। इसलिए यदि अनुशासनहीनता का कोई प्रकरण आता है तो उसका त्वरित निराकरण होना चाहिए, और त्वरित निराकरण होना यह अत्यंत आवश्यक भी होता है। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 का यह प्राविजन करता है कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। सभापति महोदय, यह बिल एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में निश्चित रूप से मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन को स्वाभाविक रूप से मजबूत करेगा। महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है उनके अनुसार चाहे भारतीय सेना हो, नौसेना हो, वायु सेना हो, सभी अपने रेस्पेक्टिव एक्ट के द्वारा ही गवर्न होते हैं। जैसे हमारा आर्मी एक्ट है 1950 का, एयरफोर्स एक्ट है 1950 का, और इंडियन नेवी एक्ट है ये 57 का। इसी के तहत बनाए गए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हीं के अनुसार सारी चीजें गवर्न होती हैं। इस एक्ट के तहत कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड अपनी डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग अपनी ही सर्विस के पर्सनल पर वह कर सकते हैं। अब तक का यह प्रोविजन है। उन्हें दूसरी सर्विसेज से संबंधित पर्सनल जो उनके संगठन में कार्य कर रहे हैं पर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग करने का अभी तक अधिकार सभापति महोदय प्राप्त नहीं है। ऐसे प्रोविजन से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में स्वाभाविक रूप से कई बार समस्याएं खड़ी होती हैं, खासकर तब जब किसी इंसिडेंट में विभिन्न सर्विसेज के पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं और उन पर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत पर्सनल को उनके पेरेंट सर्विस यूनिट्स में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कार्रवाई करनी है तो फिर उनको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भेजना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पूरा प्रोसेस न केवल टाइम कंज्यूमिंग होता है, बल्कि इसमें पर्सनल की आवाजाही के कारण अधिक धन का भी व्यय होता है। इसके अतिरिक्त यह भी समस्या आती है कि कई बार एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग जगहों की अथॉरिटीज जो होती हैं उनके द्वारा अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट किसी को अधिक किसी को कम या स्वाभाविक रूप से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विसंगतियां पैदा होती हैं। सभापति महोदय, इसलिए सभी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर्स इन कमांड के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक इनेबलिंग एक्ट बनाया जा रहा है। अतः आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इनपुट्स लेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के परामर्श से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को ड्राफ्ट किया गया है। यह बिल हमारी सेना के अंदर प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड ज्वाइंटनेस को प्रमोट करेगा। इसके साथ ही सभापति महोदय, यह बिल इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के चीफ्स को बेहतर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी प्रदान करता है, जिससे वे अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रभावी कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन ला सकेंगे और हमारे सुरक्षा ढांचे को और मजबूत व बना सकेंगे। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बिल भारत के सैन्य सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद। Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Sashmit Patra. Sir, actually, Mr. Sujit Kumar would be speaking, sir. He's the number 2. He'll take all the time, sir. It's given a correction slip also.
Sujit Kumar. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your indulgence. Sir, this is an extremely important bill as far as our security is concerned and our territorial integrity is concerned. And Biju Janata Dal has always been with the government when it comes to India's security. So we support this bill. Sir, Honorable Minister has already explained what is the rationale behind the bill. Sir, currently, personnel of the three services, namely Army, Navy, and Air Force, are governed by their respective service acts. The Army personnel are governed by the Army Act 1950, Naval personnel are governed by the Naval Act 1957, Air Force personnel are governed by the Air Force Act of 1950. Sir, when these three acts came into force, personnel of these three organizations were largely serving in their respective organizations. But sir, of late, we have seen many inter-service organizations like the Andaman Nicobar Island Command, like the Training Institutes, National Defense College, National Defense Academy, or the Strategic Forces Command, or the Defense Space Agency. Now, sir, only an officer of the same service can initiate disciplinary proceedings over a personnel of that service. This directly impacts the command, control, and discipline of the personnel serving in the three service in the inter-service organizations, shortly ISO. Because, sir, the commander-in-chief or the officer in command has no disciplinary authority over any personnel of the other two organizations, irrespective of whether they are serving in the ISO or not. So, sir, there is a lack of disciplinary authority, and anyone accused of a crime has to be sent back to the original organization from which that personnel belongs to for any disciplinary action or any administrative proceedings. Now, sir, this is time consuming. This has financial implications for our nation. And sir, if the circumstances, if the facts are such that there are multiple accused belonging to different organizations, namely Army, Navy, and Air Force, for the same set of offenses, then it becomes even more complicated. Then, because everyone has to be sent to their respective organization for disciplinary proceeding. Now, sir, this bill will have many tangible benefits because, as I have said, it will increase efficiency, it will increase discipline in the inter-service establishments. It will be less time consuming to initiate judicial proceedings or administrative actions against the accused. It will also lead to, I guess, expeditious disposal of cases, because now they don't have to be sent back to their parent organization. They can be tried by the commander-in-chief or the officer in command of the ISO. So since they don't have to be sent to the parent organization, the cases can be disposed of expeditiously. Now, sir, now, ma'am, so we support this bill. While I'm speaking on this bill, I would also like to request Honorable Minister to speak during his remarks on the theaterization plan, which has been on the table for a while now. And the idea of the theaterization plan is to integrate the capabilities of our three services. Now, what is a theater? A theater will have units from all the three services, and they will be operating under a commander. And the idea is that this unified body will be better able to address the security of our country in a particular geography. Now, sir, many military personnel have compared the move to theater command, the move towards our theaterization, without any comprehensive security strategy, as putting the cart before the horse. These are not my words. I just did some research and found this to be the view of many military professionals. Some others are of the view that India is geographically not suited towards theaterization, and resources can be easily moved even without the theater command plan. And finally, ma'am, since we already have a tri-service command in Andaman Nicobar Islands, not much is known about the outcome of this, or not much analysis or report is available as to the performance or the complexities of this tri-service command. So I would request Honorable Minister
if it is in the national interest. If it is confidential, I can totally understand. He may not share it, but if it is uh, not in the, if it is not confidential and he is willing to share it, then I would love to hear the views of the minister. Thank you, ma'am. Thank you. Honorable Sri Ayodhya Rami Reddy Allah. Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak on the Inter-Services Organization Command, Control and Discipline Bill 2023. Today, we gather here to deliberate upon a momentous piece of legislation that holds the promise of transforming our armed forces and fortifying our nation's security. The Inter-Services Organizations Bill 2023 is not just a piece of legislation, it is a testament to the power of unity and jointmanship among our armed forces. As we stand at the cusp of establishing integrated or joint commands, this bill emerges as a guiding light, illuminating the path towards a more coordinated, agile, and efficient armed forces. Let us take a moment to recognize the dedication and sacrifice of our brave soldiers, sailors, and airmen who safeguarded our borders day and night, undeterred by the challenges they faced. The few of the positives of this bill: this empower the commander-in-chief or officer in command to exercise disciplinary and administrative control over the service personnel under their command, regardless of their service. This empowerment is just not a symbolic gesture, it is a strategic move towards forging a cohesive force that operates seamlessly and cohesively. In extension, this bill seeks to recognize and strengthen the existing inter-services organizations such as the Andaman and Nicobar Command, the Defence Space Agency, and the NDA by providing them with the constitutional backing and the authority to ensure effective and command control over the personnel serving in or attached to them. Furthermore, the central government is empowered to constitute the new inter-services organizations, each comprising personnel from at least two of the three services, the Army, the Navy, and the Air Force. This opens up avenues for greater cooperation, coordination, and synergy among our armed forces, ensuring that they operate as a unified entity, responding swiftly and effectively to any threat that may arise. This bill is the provision, there is a provision in the bill for joint services commands, which will operate under the command of a commander-in-chief. This is a significant stride towards the theaterization plan of our armed forces, enabling integrated planning and joint operations. Madam, as we witness nations around the world adapting to the changing nature of warfare, this move signifies our commitment to remain at the forefront of military excellence. So, few suggestions, Madam, as we lend our support to the ISO Command Control and Discipline Bill 2023, we have few suggestions to offer to the Union government to consider. These suggestions aim to further strengthen our defense capabilities and enhance the security of our nation. The integration of entire marine system. As we recognize the importance of the maritime response to neighboring nations, it is crucial to integrate all aspects of the marine system. This includes not only naval support, but also marine merchants, fisheries, and trade capacities. A coordinating body at the apex level can assist in seamless integration and cooperation among these sectors, fostering a holistic and comprehensive approach to maritime security. Also, in an era of evolving threats, it is imperative that our armed forces adapt to the changed nature of warfare. Modern-day wars demand simultaneous operations across land, sea, and air, requiring a well-coordinated, multi-pronged strategy. The incorporation of net-centric operations, information warfare, cyber attacks, and the consideration of nuclear overhang
is vital to address contemporary security challenges effectively. In conclusion, I stand before you to lend my wholehearted support to this transformative legislation bill. Thank you. Honorable Dr. Ashok Bajpai. 10 minutes. माननीय उपसभापति जी, ये अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 इस पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय जी, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि जो आज सैन्य बल की एक बड़ी महती आवश्यकता थी और बहुत दिनों से इस पर चिंतन हो रहा था, किस तरीके से संयुक्त रूप से जहाँ पर हमारी तीनों सेनाओं की फोर्सेज एक साथ ज्वाइंट काम करती हैं, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या हमारी नौसेना हो, जब तीनों कमांड के लोग एक साथ काम करते हैं उस समय उनके ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई या कोई दंडात्मक कार्रवाई कैसे की जाए, क्योंकि इन सबका काम जो कमांड एंड कंट्रोल होता है इनकी मूल यूनिट से होता है जहां से इनकी नियुक्ति होती है और नियुक्ता अधिकारी ही इनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। ये कठिनाई आती थी और उसके लिए बार बार उनको उस अपनी यूनिट में जाना होता था जहां उनके विरुद्ध कोई प्रशासनिक या अनुशासनिक कार्रवाई प्रचलित होती थी। काफी लंबा समय लगता था उस कार्रवाई में और काफी महंगी हो जाती थी वो कार्रवाई, और उस पर समय से वो कार्रवाई नहीं हो पाती थी या वो कंट्रोल जो होना चाहिए था जहां हमारी संयुक्त कमान काम कर रही हैं वहां पर जो भी कमांडिंग ऑफिसर होता था या ऑफिसर कमांड जो होता था उसको भी तीनों सेनाओं के अलग अलग यूनिटों के ऊपर कंट्रोल करना एक कठिन काम होता था। उसके लिए कई संवैधानिक अधिकार या शक्तियां उसके पास नहीं थी, लेकिन इस विधेयक के बनने के बाद वो शक्तियां उसको प्रदत्त हो जाएंगी कि तीनों कमान जहां एक साथ काम करती हैं। मैडम, अगर आप देखें अंडमान निकोबार एक तरीके से हमारा कमांड कंट्रोल वहां पर तीनों सेनाएं काम करती हैं, थल सेना भी है, वायु सेना भी है और क्या नाम नौसेना भी, तीनों एक साथ वहां कंट्रोल होती है। एक तरीके से वो कमांड कंट्रोल एक साथ होता है। वहां पर यह विशेष कठिनाई अनुभव की गई कि नौसेना के अधिकारी के ऊपर अगर वहां का कमांडिंग ऑफिसर थल सेना का है तो नौसेना के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कैसे कार्रवाई करेगा, या एयरफोर्स के किसी अधिकारी के विरुद्ध वहां थल सेना का जो वहां कमांडिंग ऑफिसर वो कैसे कार्रवाई करेगा। तो इसके लिए ये सोचा गया कि अंतर सेवा संगठन बनाया जाए, इंटर सर्विसेज एक्ट संगठन की जरूरत महसूस की गई और उसी के तहत 2014 के बाद इस पर चिंतन, स्टेक होल्डर हैं, सबकी विचार किया जाए, सबकी राय ली जाए। तो सारे स्टेक होल्डर से राय लेने के बाद इसका विधिक परीक्षण किया गया कि ताकि इसमें कोई ऐसी विधिक त्रुटि न हो जिससे जाकर के आगे चल के काम में अड़चन हो। तमाम सारे स्टेक होल्डर्स के विचार लेने के बाद, तीनों सेनाओं के गंभीर गहन अध्ययन और विचार के बाद यह सोचा गया, माना गया कि अगर इस तरह की कोई व्यवस्था बनती है तो हमारी सेनाओं में एक बेहतर अनुशासन और बेहतर काम करने की क्षमता उत्पन्न होगी और उनके मन में भी ये होगा कि अगर हम कोई अनुशासनहीनता करते हैं तो तत्काल मेरे विरुद्ध कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन अभी तक होता था कि चाहे वो आप IIM हो चाहे NDA हो, जहां पर तीनों सेनाओं के लोग एक साथ काम करते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी तीनों सेनाओं के अधिकारी काम एक साथ काम करते होते, ऐसे नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी, और इसी तरीके से जैसे अंडमान निकोबार में जहां संयुक्त कमान काम करती है वहां पर तीनों सेनाओं के कर्मी वहां पर होते हैं, अधिकारी वहां पर होते हैं। और अगर वो कोई गड़बड़ी करते हैं, कोई अनुशासनहीनता करते हैं तो ये अभी तक शक्ति वहां के कमांडिंग ऑफिसर के पास नहीं थी कि वो दूसरे कमान के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सके। और उसके लिए वो उनकी कमान को लिखते थे या उन फोर्सेस को लिखते थे जहां से वो आए हैं, और उसके बाद वो लंबी प्रक्रिया चलती थी जिसके चलते इस सारे काम में बड़ा विलंब होता था। इसलिए एक बहुत सुविचारित एक निर्णय लिया गया कि इस तरीके का इंटर स्टेट कोई संगठन बने, इंटर सर्विसेज संगठन बने, और उसी दृष्टि में ये 2023 में ये विधेयक सदन में लाया गया है। और मैं समझता हूं इससे सेना की सक्रियता में, गतिविधियों में भी तेजी आएगी, अनुशासन अच्छा होगा, काफी समय भी बच सकेगा और बाकी काफी जनधन दोनों की हानि से भी काफी बचत होगी अगर इस अधिविधेयक को पारित होने के बाद। हम चाहते हैं कि हमारी सेनाएं आज दुनिया की सबसे समृद्ध सेनाओं में मानी जाती हैं। उनकी दक्षता, उनकी योग्यता, उनकी सामरिक शक्ति आज दुनिया उसका लोहा मानती है। तो हमारा कमांड कंट्रोल भी उतना ही अच्छा हो और हमारी जो भी
यूनिट है रक्षा संबंधी, उनमें एक अच्छी व्यवस्था हो जो दूसरी सेवाओं के लिए भी एक आदर्श उत्पन्न कर सके। इसलिए इस विधेयक की मैडम आवश्यकता पड़ी। ये बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं ये थिएटर कमांड बनाने की दिशा में कोई ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाने की दिशा में कोई कदम हो सकता है। मैडम कोई मंशा नहीं है, लेकिन ये ज्वाइंट जहां ऑपरेशन तीनों सेनाओं को एक साथ मिलकर जहां ऑपरेट करती हैं, एक साथ काम करती हैं, वहां के कर्मियों पर कैसे उन पे अनुशासन कायम किया जा सके, उनकी बेहतर सेवाएं कैसे उस संस्था को मिल सके, इसके लिए इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी। इसका ज्वाइंट थिएटर कमांड से कोई और संबंध नहीं। हालांकि अंडमान निकोबार एक तरीके से वहां तीनों सेनाएं एक साथ काम करती हैं और एक ही कमांडिंग ऑफिसर होता है और वो कमांडिंग ऑफिसर तीनों सेनाओं के अधिकारियों कर्मचारियों को कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से वही ज्वाइंट कमांड उसकी होती है जो थिएटर कमांड की कल्पना है। लेकिन ये बिल्कुल उससे अलग है मैम, जिसको कि हम लोग इस विधेयक के रूप में यहाँ लाए हैं। लेकिन इससे हमारी जहाँ संयुक्त सेवाएं हैं, और इतना ही नहीं, केवल सेनाओं के ही नहीं, पैरामिलिट्री के लोग भी जहाँ ऐसी सेवाओं में हमसे संबद्ध होते हैं, उनके कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का अधिकार इस विधेयक के बाद हमारे कमांडिंग ऑफिसर को होगा। और कमांडिंग ऑफिसर एक वरिष्ठ अधिकारी होगा, चाहे वो सेना का होगा तो ब्रिगेडियर रैंक से नीचे का कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं होगा जो कमांड कंट्रोल होगा, ब्रिगेडियर से नीचे नहीं होगा। और इसी प्रकार से एयरफोर्स, नेवी और दूसरी भी सेवाओं के जो पैरेलल ऑफिसर्स हैं वो भी इससे कम रैंक के नहीं होंगे। ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के अधिकारी ही कमांडिंग ऑफिसर होंगे जो इस तरीके की कार्रवाई उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। इसलिए मैंने इस विधेयक के पक्ष में, ये विधेयक बहुत सोच समझ के लाया गया, बहुत सुविचारित विधेयक है। इससे हमारी रक्षा संबंधी मामलों में हमारी सक्रियता भी बढ़ेगी, हमारी गतिशीलता भी बढ़ेगी और बहुत सारे निर्णय जो बहुत समय तक विलंबित होते थे, जिनके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होता था, वो भी बचेगा। और इस सबको हर तरीके से विचार करने के बाद ये विधेयक आया है। जैसा मैंने कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स की राय ली गई है, सारी जुडिशियल उसको भी इस पे परिव्यू में भी देखा गया, परीक्षण किया गया है कि इसकी जुडिशियल सेंटिटी क्या है, ताकि इसमें कोई ऐसी चीज न हो जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस विधेयक को लाने का काम किया गया है। मैं इसके लिए भारत सरकार को और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय रक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही सामयिक और बहुत ही आवश्यक विधेयक को सदन के सामने लाए हैं। और इस विधेयक को पारित होने से हमारी सेना की दक्षता बढ़ेगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी और मैं समझता हूं अनुशासन में भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा। आपने इस पर मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Sri G.K. Vasan. Very important bill brought by our Honorable Defense Minister at the right needed time, Madam. I congratulate the Honorable respected Minister for this bill. This particular bill empowers our army for a better coordination and cooperation to achieve their final goal. Many laws in this bill have been amended. Many laws have been taken away, which is not necessary. Working together as a unit is very important in the three forces which this bill has achieved. Madam, this bill seeks to empower the Commander-in-Chief or Officer in Command of Inter-Services Organization to exercise disciplinary or administrative control over the service personnel under their command. There are 3-4 important aspects in this. One is inter-service organization. 2, control of inter-service organization. 3, other forces under central government. 4, Commander-in-Chief. He will be empowered to exercise all disciplinary and administrative powers vested. 4, commanding officer. The bill provides for a commanding officer who will be in command of unit of ship of establishment. The officer will also perform duty assigned by the Commander-in-Chief or office in command of the inter-service organization. This is the crux of the bill, ma'am. Everybody are given the subject in detail. I had only conclude by telling regarding indiscipline
which has to be corrected. Minister has been very categorical in bringing this bill, and I am sure this will stop indiscipline and bring more unity. And this is a milestone in our defense sector, madam. With this, I support this bill. Thank you very much. Lieutenant General Dr. D.P. Watts. Thank you very much, Sabhapati ji, for permitting me to speak on such an important bill. First, I thank the Honorable Defense Minister and our यशस्वी प्रधानमंत्री कि वो ना तो समस्या को टालते और ना उसको पालते। ये बहुत पुरानी नीड ऑफ द आवर थी। आई विश के सुनने के लिए हमारे अपोजिशन के ऑनरेबल एमपीज भी होते यहाँ पे, क्योंकि समस्या बहुत पुरानी है, इसका मैं बाद में जिक्र करूँगा। एक बात जरूरी है, जैसा कि बताया मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, कि ये एक एनेबलिंग एक्ट, इंटर सर्विसेज कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अंडमान एंड निकोबार कमांड, स्पेस एजेंसी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस कॉलेज और ऐसी बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं which are being commanded by the rank officers of the rank of Lieutenant General, and these are tri-services institutions, मगर उनके पास अख्तियारात पावर्स नहीं है, डिसिप्लिन पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो बगैर डिसिप्लिन और बगैर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के उनकी इफेक्टिविटी नहीं होती। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी एक्ट 1950 के हैं, सॉरी एयरफोर्स और आर्मी एक्ट 1950 के हैं और नेवल एक्ट 57 का है। अब किसी नेवल पर्सनल को जो पोस्टेड है ट्राई करने के लिए फॉर एनी ऑफेंस, ही हैज टू बी अटैच्ड टू ए नेवल यूनिट एंड देयर इज ए प्रोविजन कि ऑफिसर कैन नॉट बी पनिश्ड बाय द other services officers or organizations, and personnel have to be moved out to naval units or air force units or army units for disciplinary purposes which consumes time। जो उनकी एबिलिटी है, यानी वो काम भी आ सकते हैं उस स्टेशन में रह के, वो वर्क आवर्स भी लॉस होते हैं और साथ में इकोनॉमिक लॉस भी होता है। कमांडर्स को एनेबल करने के लिए उनको ये अख्तियारात दे दिए गए हैं इस बिल के द्वारा। इस बिल को पूरी मैच्योरली डेलिब्रेट किया गया है, इसको फ्रेम किया गया, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को इसका प्रेजेंटेशन किया गया, डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी को इसका प्रेजेंटेशन जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के जज एडवोकेट जनरल्स यानी एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी के जज एडवोकेट जनरल्स जो हमारे लीगल ल्यूमिनरीज हैं, फिर इसको लीगल ल्यूमिनरीज को भी रेफर किया गया और फाइनली इसकी फ्रेमिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड ऑल लीगल एस्पेक्ट्स वर डन अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो नाउ एक ये परिपक्व बिल है। रही बात कमांड, यानी सुजीत कुमार जी ने कहा विद इन कॉन्स्टेंट्स, आई विल लाइक टू से इज देयर ए नीड फॉर थिएटर कमांड्स। थिएटर कमांड्स बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में भी थे। अमेरिका तो ग्लोबल पॉलिसिंग का काम करते हैं, उनके पास मैनी 4-स्टार जनरल्स कमांडिंग दी थिएटर कमांड्स एंड इवन 5-स्टार जनरल्स भी हैं, और वो पैसिफिक कमांड है, अफ्रीका कमांड है, यूरोपियन कमांड है, यानी पूरे वर्ल्ड पे उनका ग्लोबल पॉलिसिंग का एक्शन है एंड देयर इकोनॉमी परमिट्स देम टू मूव दी फोर्सेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड। थ्रेट परसेप्शन ऐसी है कि चाइना ने भी थिएटर कमांड्स बनाए हैं, 5 उनके पास भी हैं और उनका वेस्टर्न कमांड इज फेसिंग अस। जहां तक हमारा सवाल है, अभी तक तो हमारा डिफेंसिव ही स्ट्रेटजी है कि टू डिफेंड दी
territories of India. मगर जैसे हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमिक पावर हैं और मोदी जी की कमांड में जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 2030 तक या 2027 तक हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे. We have a very big sea line to defend. Asia Pacific, we have a role. We are members of Quad also. Under these situations, we may also have to follow the steps what superpowers have. Therefore, we should not look in a very limited way towards our territories also. It has also been brought out that government with specific notifications, though we are not creating a command, means theater command just now, but it is enabling, it is certainly a platform for the constitution, because it will be a decision of the Ministry of Finance, standing committee, means a cabinet committee on security, and if they notify it, certainly a theater command can be constituted. Same way other paramilitary forces, standing orders are there. When war comes, then BSF, CRPF, Coast Guards, they will come under the command of respective forces, armed forces. As far as the discipline is concerned, central government can very well notify, and with this notification, they become the part of theater command also. So in totality, it is a enabling act, and as I was mentioning, कि अगर हम fully prepared होते, तो 1962 में चाइना के हाथों हमारा बिटर एक्सपीरियंस नहीं होता. अब हमारी फोर्सेस हिमालय की चोटियों पे खड़ी हैं, उनके प्लेटू को ओवरलुक कर रही है, और बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बना लिए गए हैं बॉर्डर रोड द्वारा. यानी कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड. वी आर ए न्यूक्लियर पावर्ड नेशन, एंड वी नीड टू ग्रो. फॉर दैट ग्रोथ we need to strategize, prior proper planning, and then we have to exert our might. Or you can say our policy of a velvet glove with an iron fist. If we are not strong, then people will not acknowledge our might. Though we want peace in the world, Vasundharaye Kutumbakam मोदी जी का नारा है, मगर उसके लिए हमें ताकतवर होना पड़ेगा, और उस ताकत के लिए एनेबलिंग बिल्स की बहुत जरूरत है कि ये एक्ट बनके वजूद में आए और फोर्सेस का डिसिप्लिन चुस्त दुरुस्त और मजबूत हो. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम. आई सपोर्ट दिस बिल. Honorable Sri V. Vijayasai Reddy. Thank you, Vice Chairperson. Madam, I, on behalf of my party and my leader, Y.S. Jagannath Reddy Garu, rise to support this bill. And we support this bill. This bill seeks to rectify the crucial blockages in inter-service organization, and hence we support this bill. I would like to make three suggestions to the Honorable Defence Minister on the overall military reforms in this regard. Madam, the first point number one is low defence spending. India was the third largest spender in absolute terms, absolute monetary terms, when compared to USA and China, after USA and China. Madam, because China's economy is very large economy, and it implies that it spent 3.5 times over India. When it comes to the absolute terms, while India spends about $77 billion, and when it works out in terms of percentage of GDP, it works out to 2.66%, whereas percentage of China spending on GDP is only 1.74. However,
In terms of in absolute monetary terms, it is $293 billion, whereas 293, whereas 77. So the comparative figures may give a different indication. However, there is a necessity to increase the military spending, which I request the Honorable Minister to kindly look into the issue, sir. Sir, Madam, the Ministry has a share of central government. Share of central government in 2016 and 17, it was 17.8% of the total central government expenditure, and which has declined to 13.2% in 2023-24. In fact, a suggestion has been made by the committee and on Ministry of Defense, the Ministry of Defense should be allocated at least a minimum of 3% of GDP to ensure adequate preparedness of the armed forces. Madam, I request the Honorable Defense Minister to kindly look at the issue and ensure that the minimum amount of 3% of GDP is allocated to the ministry in the interest of the nation. The second point, which I would like to bring to the notice of the Honorable Defense Minister, is a high number of vacancies. Madam, as per the government data available with me, there are about 1.55 lakh unified positions across the three forces. Madam, the Army accounts for the maximum of 1.36 lakhs vacancies, followed by Navy of 12,500 vacancies and Air Force 7,000 vacancies. I request the Honorable Defense Minister to kindly look into the vacancy position and address the issue to give a renewed thrust to the recruitment in mission mode, Madam. The third point which I would like to bring to the notice of Honorable Defense Minister is absence of national security strategy, which has long impeded tri-service integration. This is very important issue, Madam. Most of the global players, be it US, China, UK, France, all developed countries, including Japan, have the formal national security strategy or policy. I request the Honorable Defense Minister to clarify the status of NSS in the country and steps being taken towards it. Thank you very much, Madam. We support with this in this bill in this regard. Thank you very much. Dr. M. Tampiture. And thank you very much, Chairman. I support the bill introduced by Honorable Defense Minister Rajnath Singh Ji. In the introduction, he said about the policy of the present government, especially under the leadership of Honorable Prime Minister Modi Ji and also Rajnath Singh Ji. How they are strengthening our army and modernizing. At the same time, what are the reforms required? In that respect, only he has brought in the Inter-Services Organization, Command, Control and Discipline Bill 2023, 6, empowerment of Commander-in-Chief and Officer-in-Command of the Inter-Service Organization with all disciplinary and administrative powers in respect of personnel servicing in or attached to the such organization. This is a very important thing he has brought in. First of all, Madam, when we are discussing about the Defense Department, security also is what we are discussing. So our Indian security, not only the army is also strengthening, I'd say border security also more important. For example, if you take Tamil Nadu, there are Kachetiv issues there. As our already member, one honorable colleague said, when marine security is at the point, when the fisherman is going, how the navies are protecting, and also other navy, that Sri Lanka Navy, how they are treating our fishermen. In that, because of Kachetiv is part of our Indian territory, still it is under control of Sri Lanka. Because at that time, Indira Gandhi period, she unceremoniously, it is given to the Sri Lanka. But it is not passed and approved by the parliament. Any territory, if you are giving to any other country, it has to be approved by parliament. Still, it is not yet approved.
In this regard, our Honorable former Chief Minister, Madam Jayalalitha ji, went to the Supreme Court and put a case that this Kachadweep is the part of our Indian territory, which because of that, Navy can also use that area and save our Tamil Nadu fishermen. That kind of way to secure give the protection, and not only the country and our fishermen community, Tamil Nadu fishermen, the defense minister has come forward to see that somehow the Kachadweep is still once again to come to our thing. That has to be done. We are requesting that. For a long time, they are demanding this issue. This is very, very important to solve the Tamil Nadu fishermen issue. And also Tamil Nadu fishermen, they are taking with the Sri Lankan Navy. They are shooting our fishermen. They are our Navy. I don't know what they are doing. Sometimes they are risking that they are not giving. But instead of that, all Tamil Nadu fishermen is taken to put in the prison of Sri Lanka. And we are going requesting our Prime Minister to release them. But after taking India government, we have seen that our Honorable Prime Minister took a lot of steps to free our fishermen from Sri Lanka. We are appreciating that. We are not denying that. At the same time, for security reasons, especially defense reasons, not only you are bringing so many reforms, appreciate that. And disciplinary thing is very, very important. At the same time, defense area also important for the country. In that respect, I request Honorable our Defense Minister to see the Tamil Nadu demand for a long time to bring that once again the Kachadweep part of our Indian territory. That is my request. In that respect, I am supporting this bill. Thank you very much. Thank you. Honorable Sri Kanaka Medala Ravindra Kumar. Thank you, Madam, for giving this opportunity. The Inter-Service Organization Command, Control and Discipline Bill 2023, the government intended to bring the officers belonging to various service of defense establishment, that is Air Force, Navy and Army, but who are serving in an interest service organization under Commander-in-Chief of the, or the Commander, Officer-in-Commander under a single act, so that while serving under a Commander-in-Chief or the Officer-in-Command, any disciplinary issues that can be dealt accordingly without referring the matter to the respective services for taking appropriate action under relevant act, that is Air Force Act 1950, Army Act 1950 or Navy Act 1957. This bill is basically enabling legislation which empowers the heads of the inter-service organizations to service effective command, control and discipline on all personnel of regular Air Force, Army and Navy and to persons of other forces as notified by the central government who are serving in or attached in inter-service organization without amending the respective acts. Sir, over the period of time, military operations become more complex and interdependent because the global security landscape has evolved in such a manner. The emergence of symmetric threats, cyber warfare, and the need for joint operations demanded greater coordination, communication, and seamless integration among the different branches of armed forces. The Inter-Service Organization Command, Control and Discipline Bill 2023 is essential under these circumstances. What happened during the Mumbai terror attack, everybody knows, due to this systematic coordination between various security forces, the threat was handled in such a coordinated manner that the perpetrators were forced to run for shelter and they took shelter in neighboring countries. This bill acknowledged the requirement for a unified approach to command, control and discipline within the armed forces by establishing a precise and uniform mechanism across all ISOs. By granting Commander-in-Chief and Officer-in-Command of ISO authority to exercise disciplinary and administrative powers, regardless of the specific services of personnel belonging to, the bill fosters a sense of unity and collective responsibility. This bill would have a direct impact on command, control, and discipline of inter-service organizations like Andaman and Nicobar Command or Defense Space Agency
and joint training establishment like National Defense Academy or National Defense College. As the Commander-in-Chief or officer in command of such inter-service organizations are not empowered to exercise disciplinary or administrative powers over the personnel belonging to other services. In view of this, this bill is very much needed. I congratulate the Honorable Defense Minister. In view of this, I welcome and support the bill. Thank you, Chair. Shri Sujit Kumar, he wants to make. Thank you for allowing me another 30 seconds, though I've already spoken on this bill. Sir, मैं दो बातों के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ. Sir, the entire nation knows about the aggression of China in the Indo-Tibet border. The Indo-Tibet border, sir, not India-China border. Sir, लेकिन सर पहली बार 1962 के बाद हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे पाए चाइना को और आंख से आंख मिला के आज चाइना के साथ हम लोग खड़े. So this definitely deserves compliments and commendation on behalf of the House to the Honorable Defense Minister. और सर दूसरी बात, sir, I would like to salute the work of Border Roads Organization (BRO). Sir, I have interest in strategic issues, and I have been to Pangong Lake, DBO Dolatabag Oldie, and Bumla Pass near Tawang in Arunachal. Sir, the kind of roads we have today in our border areas is, sir, to be seen, to be believed. 10 साल पहले सर हम लोग बहुत पीछे थे चाइना के सर इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने. आज सर really the BRO has done such a stupendous and stellar work. For this also like to commend Honorable Defense Minister. There is a bit mood. The Honorable Raksha Mantri's contribution is so impactful, so massive, making the nation proud. And I'm so glad you took time again and reflected on this. Shri Kamakhya Prasad. थैंक यू सर, मेरे को बोलने का अवसर दिया. मैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 पर बोल रहा हूं और मैं ये सपोर्ट में खड़ा हूं. मैं ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देता हूं. क्या ये जो इंटर डिसिप्लिनरी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड बिल लाया, इसके लिए वो बहुत दिन से सोच भी रहा था और अभी वास्तव में आ रहा है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का टाइम पे ये हम लोग का जो सम्मान था, ये सम्मान पूरा वर्ल्ड में बढ़ा है. केवल पॉलिटिक्स में नहीं, पूरा ऑल साइड, स्क्वायर साइड में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर में ये बढ़ा है और उसमें ऑनरेबल राजनाथ जी का बहुत बड़ा एक रोल भी रखा है. सर, हम लोग जानते हैं कि आज टाइम का हिसाब से जैसे डिफेंस सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो सराहनीय है. और अभी हम लोग जानते हैं कि आज जैसे डिफेंसिव एक मूड में रहता है कंट्री, अभी एक ऑफेंसिव मूड में भी आया है और विभिन्न समय में इसको हम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं. सीडीएस जो पोस्ट था, ये सीडीएस क्रिएट हुआ है. सीडीएस क्रिएट होने के बाद इंटर डिसिप्लिनरी सर्विस में भी तो एक आर्मी, नेवी एंड मिलिट्री में एक जो तालमेल है, ये तालमेल बहुत सुंदर हुआ है, हम लोग को देखने मिला है. और टाइम का हिसाब से थिएटर कमांड का भी जो थ्योरी अभी वास्तव में हो रहा है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं. सर, मैं डिफेंस कमेटी में रहते हुए देखा, डिफेंस सेक्टर में जो व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, ये किसी टाइम से सबसे ज्यादा है. ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो थ्योरी है, ये आत्मनिर्भर भारत थ्योरी को वास्तव में रूपायित करते हुए मिसाइल हो या बंदूकें हो या तोपे हो, इसमें जो चेंजेस लाया है और तीनों सर्विस में, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री में जो तालमेल, आपसी तालमेल है, इसको जितने बढ़ाने का काम किया है, मैं रक्षा मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं. और देख रहा हूं क्या तीनों सेना, तीनों फोर्सेस में एक अच्छा सा तालमेल होने के बाद ये ऑफेंसिव से डिफेंसिव से ऑफेंसिव, जैसे रक्षा मंत्री जी विभिन्न मीटिंग में सेमिनार में भी बोलते हैं, इसमें बोला है, इसको वास्तव में कार्यान्वित हुआ है. और अभी जो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन आया है, इसमें खाली डिसिप्लिन का मैं जितना दिन हम लोग देखा है, ये तो डिसिप्लिन है, फिर भी इसमें इंटर सर्विस में इनका जो तालमेल है, इसको रखने के लिए जो बिल का प्रावधान क्या है, ये मैं चाहता हूं तीनों बिल से थोड़ा अलग तो नहीं है, लेकिन तीनों
बिल को समाहित करके ये लाया है। और कमांड में जो आर्मी कमांड है, आर्मी कमांड का आर्मी का ऊपर में भरोसा और ज्यादा बढ़े, इसका भी व्यवस्था किया है। ऐसे उनका रिमार्क्स, ओपनिंग रिमार्क्स में ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने पूरा बोल ही दिया है। मैं चाहता हूं क्या इन फ्यूचर जैसे आत्मनिर्भर भारत क्या है, डिफेंस में हो या एयरफोर्स में हो या मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में जो किया है ये सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अब भारत का भी जो सामान वह इंडिया में ही बन रहा है। जो अलग है, जो नहीं मिलता है वो बता लगे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सोचा था वो डिफेंस मिनिस्टर ने लाया। और यंग ऑफिसर्स के बीच में इनका जो कॉन्फिडेंस है मैं देख रहा हूँ, और चाहता हूँ कि सैनिक स्कूल बढ़ाने का भी व्यवस्था किया है। ये स्कूलिंग टाइम से सैनिक स्कूल का जो चिंतन है और इसका स्टेज में और ज्यादा बढ़ाने का जो व्यवस्था किया है, मैं रक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। क्या फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज आदमी को इसमें इसका ऊपर में भरोसा भी होगा। और जो अभी विभिन्न हम लोग का स्टेट्स में हो या में जो फोकस कर रहे हैं आर्मी का ऊपर में, ये भी अच्छा है। इंटर स्टेट इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा बिल में इसका विस्तृत विवरण है, इसलिए मैं बिल पे नहीं जा रहा हूँ। इसका थीम में स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस, और इसमें रक्षा मंत्री जी ने बोला है सर ये बात है क्या आर्मी का मन में जो आर्मी का फोर्स का ऊपर में जो भरोसा था वो भरोसा बढ़ा है। और इंटर सर्विस इसमें इनका इंटर सर्विस तीनों फोर्स में जैसा इनका मानसिकता है इसको चेंज हो जाएगा, और फ्यूचर में एक सबसे बड़ा, सबसे विश्वगुरु जैसे बोल रहे सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स में रूपांतर होगा, विश्वास करता हूँ। थैंक यू। श्री राजनाथ सिंह टू रिप्लाई द डिस्कशन। आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री सुजीत कुमार जी का, अयोध्या रामाराव जी रेड्डी का, और श्री अशोक जी वाजपेयी का, जी के वासन जी का, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बीपी वत्स का, और डॉक्टर वीके साई रेड्डी जी, और एम थम्बेदुरई जी, और कामाख्या प्रसाद जी का। इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस बिल का यहाँ समर्थन किया है। वहीं पर जो कुछ भी सुझाव आवश्यक थे वह सुझाव भी उन्होंने दिया है। मैं अपनी बात रखने के पहले जो बातें सुजीत कुमार जी के द्वारा की गई हैं उस संबंध में कुछ बातें रखना चाहूंगा। थिएटराइजेशन के संबंध में इन्होंने हमारे विचार जानना चाहा है। मैं समझता हूं कि थिएटराइजेशन एक अलग सब्जेक्ट है और इस संबंध में अभी कुछ कहना या प्रीमेच्योर होगा, लेकिन इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि थिएटराइजेशन होता है तो यह हमारा जो एक्ट है तो एक सामान्य नोटिफिकेशन के द्वारा, एक सामान्य अधिसूचना के द्वारा यह जो है हमारा जो थिएटर कमांड होगा उस पर भी यह प्रभावी होगा, यह मैं जानकारी देना चाहता हूं। और हमारे रामा रेड्डी जी ने मैरीटाइम सिस्टम और एजेंसी के क्लोज कोऑर्डिनेशन की बात उन्होंने कही है। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि हमारा मैरीटाइम इंटरेस्ट पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। इस सदन को कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर प्रकार के वारफेयर के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, और यह तैयारी का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर हमारे रेड्डी साहब ने कुछ और बातें कही हैं। वह कही है उन्होंने जनरली सपोर्टेड लो डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में कहा है, और वैकेंसीज इन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कहा है, और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में कहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं सभापति महोदय, और फिर से मैं अपनी बात को यहां पर दोहराना भी चाहता हूं कि भारत की सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों की हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। और यहाँ पर बल्कि मैं कहना चाहता हूं जितने वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं उसके अंतर्गत हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए इन्हीं संसाधनों के अंतर्गत ही हम लगातार काम कर रहे हैं। 3 to 4% ऑफ जीडीपी की जो बात कही जा रही है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 3 to 4% ऑफ जीडीपी ही क्यों, आवश्यकता पड़ी तो 5%, 6% ऑफ जीडीपी भी इस देश की सिक्योरिटी के लिए और हमारी डिफेंस के लिए खर्च किया जा सकता है। वैकेंसी को भरा जाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और लगातार इस समय भर्ती चल रही है। और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जहां तक सवाल है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के संबंध में भी एप्रोप्रिएट लेवल पर इस समय हमारे यहाँ काम हो रहा है।
अभी तक यह स्ट्रेटजी बन नहीं पाई थी, एक कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए नहीं बन पाई थी, लेकिन उस पर फिलहाल काम चल रहा है। थम्बी दुरई जी ने कुछ चीजें जानना चाहा है। एक तो सपोर्ट किया है इन्होंने इस बिल का, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये उन्होंने एक तो फिशरमैन की बात उठाई है और आइलैंड हैंडेड ओवर टू श्रीलंका शुड बी ब्रॉट बैक की बात कही है, और तमिलनाडु सिस्टम बीइंग स्टार्ट बाय श्रीलंकन नेवी या कुछ ऐसा कही है। मैं इस संबंध में माननीय सदस्य को यह मैं बतलाना चाहूंगा कि इंडियन नेवी भारतीय फिशरमैन की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए सदैव मुस्तैद है और हमारी फोर्स, हमारी नेवी उस दृष्टि से काम कर रही है। सभापति महोदय, जहां तक वारफेयर का प्रश्न है, वारफेयर का स्वरूप बदलता रहता है समय समय के अनुसार। अब क्योंकि वारफेयर अब कन्वेंशनल नहीं रह गया है, ये हम सभी जानते हैं, बल्कि वारफेयर टेक्नोलॉजी व नेटवर्क सेंट्रिक यह होता जा रहा है। अतः यह आवश्यकता है कि जो हमारे नए चैलेंजेस हम लोगों के सामने आ रहे हैं, उनका सामना करने के लिए हमारी सेनाएं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके अंदर की बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बेहतर तालमेल होना चाहिए। इसी बात कर ही यह बिल सदन में लाया गया है। तीनों सेनाओं के पर्सनल्स आपस में एक साथ मिलकर काम करें और तीनों सेनाओं के मिलने से ही इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और मैं समझता हूं कि यह ऑर्गेनाइजेशन बन जाने के बाद, यह एक्ट पास हो जाने के बाद, हमारी ये जो इंटीग्रेटेड होकर हमारी ये जो ये इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है और बेहतर तरीके से ये काम कर सकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में, जब यह बिल स्टैंडिंग कमेटी जो रक्षा विभाग की है उसके समक्ष विचाराधीन था, तो इस स्टैंडिंग कमेटी ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव माना इस बिल को, अपने इतना परफेक्ट माना है कि स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है और अपील की है दोनों सदनों से कि बिना किसी संशोधन के इसे सदन के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया हो कि बिना किसी अमेंडमेंट के इसे पारित कर दिया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को कि बिना किसी अमेंडमेंट के वो इस बिल को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर भी जो हमारे व्यू पॉइंट हैं, उनको मैंने इस सदन के समक्ष रखा है। और आगे जो जो भी सुधार की आवश्यकता होगी, जो भी, क्योंकि रिफॉर्म्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। जिस जिस प्रकार के रिफॉर्म्स की जरूरत होगी वो सदैव हम करते रहेंगे, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। और मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस बिल के ऊपर व्यक्त किए हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और माननीय सभापति महोदय, आपके प्रति भी मैं विनम्रता पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी मुझे इस बिल के ऊपर अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। The question is that the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 15 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 15 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Rajnath Singh to move that the bill be passed. आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं। Motion moved that the bill be passed. The question is that bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed.
Shri Dharmendra Pradhan to move a motion for consideration of the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that the bill further to amend the Indian Institute of Management Act 2017 as passed by Lok Sabha on 4th August 2023, listed in today's revised list of business or serial number 7B to be taken into consideration. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Amar Patnaik, time allotted 8 minutes. Thank you, Chairman, sir. Sir, I would like to first of all, welcome the introduction of this bill. I think this was necessary, considering the fact that the original act of 2017 had basically tried to give academic autonomy to all the IIMs. The IIMs have been perceived to be institutes of preeminent importance in our country, national importance, and in fact, in some ways across the globe. They had very high rankings. Some of the IIMs featured in the top 50. The current bill which has been brought in essentially has two parts. One part is to give is to upgrade the National Institute of Industrial Engineering Mumbai into an Indian Institute of Management Mumbai. I support this particular upgradation. At the same time, I could probably recommend to the Honorable Minister, if instead of only looking at public sector institutes, if it is possible to also upgrade some other institutes of importance in states with private participation or joint state and central government participation, so that we would have more number of institutes in the country, and the management education ecosystem will spread across the country and will not get limited to only state capitals or in some cases important cities of the country. It is important that rural people of India, agro management, agroforestry management, these are only interdisciplinarity that India can actually bring in, which the foreign institutes of management do not have. Now, the second part is basically consisting of 5 important amendments, and these amendments I will refer to one by one. The first one is relating to Section 10 of the Principal Act. The Section 10 of the Principal Act, it talks about the President of India shall be the visitor of every institute. This is an insertion which has been made, and I wholeheartedly support this, because I think all the Indian institutes of technology which have equal amount of stature in the global arena also have the president as the visitor. So I think this was necessary. While this particular bill, this particular insertion is welcome, I would also like to refer to the insertion of 10A2, subclause 2. The visitor may appoint one or more persons to review the work and progress of any institute and to hold inquiries into the affairs thereof and to report thereon in such manner as the visitor may require or may direct. Why this has come up? This has come up, Honorable Chair, because the existing situation in the Indian Institutes of Management after the 2017 Act, which gave them complete freedom, operational, financial, academic, all kinds of freedom, they did not really institutionalize the kind of protocols required to deserve that kind of autonomy. I will refer to one of their very celebrated ex-directors of IIM Ahmedabad, Dr. Bakul Dholakia. In an interview, he said, the IIM Act mandated an independent review of each institute every 3 years. I'm talking about the 2017 Act, which was to be conducted by eminent independent individuals who could objectively evaluate the institute's overall performance. The IIM Act specifies
that the review report must be presented to the board, and after its approval should be placed in the public domain. The idea is that the board, the director would be responsible to the board, and the board would be responsible to the public, because after all, many of these IIMs are completely funded by the government. There has to be some amount of accountability. But he himself states, however, in last 6 years, only IIM Bangalore has conducted such a review. And therefore, I support the insertion of 10A2, which says that the president may appoint one or more persons to review the work in progress. However, I would like to add a word of caution here. The word of caution is, I think the review of work in progress should be in areas other than academic and research related matters, because I think there the interference should be minimum unless the person who is reviewing is also an expert in that particular domain. I believe that autonomy and accountability go hand in hand. If you want autonomy, you also have to be accountable, which was not happening, and therefore this bill is welcome. Inefficiency of the existing grievance redressal procedure and breakdown of the governance structure in the IIM resulted in this particular introduction of these amendments in the original 2017 Act. However, as I said, while under-regulation is bad, over-regulation, which might lead to interference, is worse, far worse. So I think we have to be careful about this. The history has, however, revealed, and this is what Dr. Dolakia says, that government intervention in the IIM affairs has been very minimal. And this is really welcome. I hope this particular trend will continue despite the new introduction of a visitor and a committee to look after the affairs in terms of reviewing their performance from time to time. Then I'll come to the next section, section 16 of the Principal Act, which has been amended at subsection 3. It says that the director shall be appointed out of a panel of names recommended by a search cum selection committee to be constituted by the board consisting of XYZ. Now, the point here is what has happened was that such a procedure already existed, but there was completely, it's a kind of inbreeding that was happening. There was nobody from outside. Now the president will be able to appoint somebody into the search and selection committee, which is welcome. I could again give a suggestion to the honorable minister here, since he is present here, that this process should not, however, be longer than the previous system. Would it be possible that the existing board, some of the members could be designated who will act as the search and selection committee, recommend a panel of names to the government of India, to the president, who will do the selection, in which case the process may become faster. The next point is relating to the committee of certain experts believe that the IIMs are public institutions answerable to the people of India, and the bill will ensure they do not turn into private. That will there be unnecessary interference by ensuring that the president is at the helm of affairs while directing any kind of inquiry. Earlier, the inquiry is being ordered by the board itself into its affairs, which was there was definitely a conflict of interest. So I think the amendments are more or less in order. Only thing I would now hope that in 2009-10, IIM Ahmedabad ranked 11th in the Financial Times rankings for the one-year program and 41st in the economic rankings for the second two-year programs. However, its current rankings have declined to 51 in FT rankings, from 11 to 51, and 41 has become 99 in economics rankings. With these changes and with kind of an affirmative intervention into the scheme of things, and with under the direction of honorable minister, I am sure the rankings will improve and the ecosystem will improve. However, it is extremely important that the management education should spread across the country. People who are probably not able to learn in English and learn in local languages, some kind of mechanism could be held in which the IIMs could handhold some of these institutes at the state level and give them the courseware in local language, in which case the educational knowledge would spread, the management educational knowledge would spread,
And this is required for all disciplines and not necessarily in business management. With these, I support the bill, commend the minister and commend the government for bringing in these changes. Thank you so much, sir. धन्यवाद डॉक्टर अमर पटनायक जी। माननीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, 1961 में ये महसूस किया गया कि देश की अर्थव्यवस्था और डेवलपमेंट फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का संचालन किया जाए, जिसमें देश के बेहतर स्टूडेंट पढ़ें और देश की आर्थिक प्रगति करें। और उसी क्रम में 2 इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शुरू किए गए, एक अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता। बाद में 4 इंस्टीट्यूट और बढ़ाए गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड। इस प्रकार 4 इंस्टीट्यूट और बढ़े और कुल मिला के 6 इंस्टीट्यूट बनाए गए। माननीय मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद, जहां पिछले 70 वर्षों में लगभग 6 इंस्टीट्यूट थे, माननीय मोदी जी के आने के बाद 7 इंस्टीट्यूट बढ़ाए गए और इस प्रकार इन इंस्टीट्यूट्स की संख्या 13 हुई। आप समझ सकते हैं कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है, उस पर कितना तेजी से काम कर रहा है। और उनके इस सहयोग में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें एक और इंस्टीट्यूट का इजाफा करने जा रहे हैं। महोदय, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई एक बहुत अच्छी संस्थान है और इसने देश के टेक्नो मैनेजरल स्ट्रेंथ में काफ़ी वृद्धि की है। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में सब कुछ होने के बावजूद, चूंकि नेशनल इम्पोर्टेंस का इसको दर्जा नहीं प्राप्त था, तो ये अपनी डिग्री नहीं दे पाते थे। उससे इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में और इंस्टीट्यूट के छात्रों में थोड़ा सा एक मन में रहता था कि इतना सब होने के बावजूद हमको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसलिए इस बिल के माध्यम से उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का दर्जा दिया जा रहा है, जिसका मैं स्वागत करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम करेगा। आज जब भारत में माननीय महोदय देश की अर्थव्यवस्था को हमको तीसरे स्थान पर लेके जाना है, तो हमें आवश्यकता है कि देश में अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो और उनके छात्रों के माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था को गति दें। और आज न केवल ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, इस प्रकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे मैनेजरियल स्किल के साथ देश के अच्छे नागरिक और अच्छे मैनेजर बना रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में काम बढ़ाने में काम कर रहे हैं। महोदय, इस इंस्टीट्यूट में 22-23 के लिए 65 करोड़ रुपए इसको बजट दिया गया था। बाद में इसमें 80 करोड़ रुपए इस बिल के माध्यम से इसको और दिया जा रहा है और ये केवल एक बार के लिए दिया जा रहा है। अन्य वर्षों में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री जी से एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि हम जहां इतने अच्छे इंस्टीट्यूट बना रहे हैं मैनेजमेंट के, इनको हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए भी अलाउ करें। ये एक मेरा सुझाव है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कर रहे हैं और उन इंस्टीट्यूट को डिज़ाइन के माध्यम से, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के माध्यम से उनकी बहुत सारी आय भी होती है। हमारे जितने प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं मैनेजमेंट के, अगर ये जो सिक इंडस्ट्रीज हैं या जिन इंडस्ट्री में मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, उनकी अगर मैनेजमेंट सॉल्विंग की प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए। महोदय, आज ये भी आवश्यक है कि हम अपने छात्रों को वर्ल्ड क्लास और पूरी दुनिया में स्थापित करें। उसके लिए भी दुबे जी, ये गलत परंपरा है। दुबे जी, माननीय सदस्य।
जब माननीय स्पीकर से बोल रहे हो तो उनके राशन के बीच में नहीं आना चाहिए। आप विराज पीछे बैठ जाए, धन्यवाद। कहीं बैठ जाओ। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं इस चीज के लिए माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो एक और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। आज दुनिया भर में जितने भी बड़े संस्थान हैं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो हैं वो भारत के हैं। भारत में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और आज भारत का नाम जो है पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। महोदय, इस बिल के माध्यम से जो हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इस बिल में ही उसमें ये प्रोविजन है, जो हमारा सेक्शन 10A था उसको 10A से रिप्लेसमेंट दिया जा रहा है और इसमें जो विजिटर है उसमें बोर्ड के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी विजिटर ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसमें जो अपॉइंटमेंट का भी तरीका है वो भी पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। इसमें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी पूरे देश भर में ये देखेगी कि कौन कौन अच्छे फैकल्टी मेंबर्स मिल सकते हैं, अच्छे मैनेजमेंट के प्रोफेसर मिल सकते हैं। उनका नाम सर्च करके भेजा जाएगा और उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको हम इस इंस्टीट्यूट में बनाएंगे, डायरेक्टर के रूप में, फैकल्टी के रूप में। अब इस बिल के माध्यम के बाद इस संस्था को अपनी डिग्री अलॉट करने का, डिग्री ग्रांट करने का मौका मिल जाएगा, जिससे निश्चित रूप से ये एक बेहतर कदम होगा। माननीय महोदय, आज जैसा कि मेरे मित्र अमर पटनायक जी ने भी बताया कि ग्लोबल रैंकिंग में हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार उनकी मीटिंग करें, उनकी समस्याओं पर विचार करें और जो भी इसके लिए हो सकता है। आज आवश्यक है कि हम हिंदुस्तान में अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग को इम्प्रूव करें। आज माननीय मोदी जी ने, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें भारत आने का एक मौका प्रदान किया है, लेकिन उसमें होगा ये अधिकांश इंस्टीट्यूट या अधिकांश जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इनिशियल लेवल पे भारत के जो संस्थान बनाने में उन्हें समय लगेगा। तो हमारी जो ग्लोबल रैंकिंग अगर बढ़ेगी तो ये न केवल भारत का नाम रोशन करेंगे, यहाँ के पढ़े जो लोग हैं वो भारत का विदेशों में भी प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी इसका फायदा होगा। और जो यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में आएंगी उन यूनिवर्सिटीज को भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिलेगा। और आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं ड्यूअल डिग्री देते हैं, जिसमें स्टूडेंट कुछ समय यहाँ पढ़ते हैं, कुछ समय विदेश पढ़ते हैं। तो उस तरह का स्टूडेंट्स का जो बेटर एक्सपोजर होता है वो भी एक चल रहा है। जब यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में आएंगी तो उसका इसमें और फायदा होगा। मैं माननीय महोदय और माननीय मंत्री जी का इस एक बेहतर बिल के लिए धन्यवाद करता हूं और मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर नील अग्रवाल सर। माननीय मस्तान राव It's on. The Indian Institute of Management, IIM, are primary education programs that in the IIMs were designated as institutes of national importance. The Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023 comes 6 years after the IIM Act of 2017. The amendment upgrades the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, to the Indian Institute of Management, IIM, including it in the IIM network. NITIE has encountered several hurdles as a result of its absence from any act of parliament. With this amendment, there shall be further seats available for management aspirant, which is positive message for them. Honorable President of India is designated as the visitor of each institute under the amendment.
The presence of the visitor shall give further strength to the system and also a centralized same. Can the minister please state the reasons and the need for appointing a visitor to IIMs, given it directly leads to curtailing of autonomy of such institutes? Can the Honorable Minister also be state as to why the visitor's prior approval is required in appointing or nominating people for the said positions? Why has the autonomy of the IIMs being taken away? We should look at the top B schools and how they function to ensure that out IIMs are able to compete at the global stage. Institutions such as Harvard, Cambridge, Oxford, or Berkeley are being partially or sometimes fully funded by the government depending on the course. Yet they exercise a greater degree of autonomy. Management is a course that needs specialist and institutional freedom. On the first reading, it looks like that the bill is taking back what the 2017 amendment had given to them. The bill makes no mention of the exorbitantly high fees charged by the premier institutes. The quality of education offered by the IIMs remains unmatched, but it's still a dream for students from low-income households to get enrolled in such courses. The IIM MBA fees for top IIMs such as IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, and IIM Calcutta are the highest, ranging from 20 to 25 lakhs. While there are provisions for scholarship offered by the governments and different IIMs, many students don't have the right guidance and coaching facilities in order to land on the merit list. Can the Honorable Minister clarify if any provisions would be made regarding fees waivers for financially weaker strata of the society? If the ministry plans on the initiating coaching facilities aimed at preparing students for CATs from the weaker sections of the society. The provisions of IIM Act of 2017 enabled the board to launch an investigation into institute if it failed to operate in compliance with the act. Such investigations were to be carried out by a retired High Court judge. However, the bill repeals all these provisions and proposes a new inquiry mechanism. It grants the visitor the ability to inquire. Can the minister state the reasons for doing away with the section 17 of the act? Can the minister also be pleased to explain the plan of action undertaken by the visitor while investigating such cases? Also, as per the institutional position, the presence of visitor equates to the presence of the education ministry in the process. How does the presence of government in such process benefit the IIMs or its 1 minute, sir? While the move to include NITIE Mumbai under the ambit of IIMS has been widely appreciated, a few sections of bill tend to undermine the functioning of IIMs, thereby having a negative impact on their performances. I sincerely urge the Honorable Minister of Education to address the concerns raised above and provide explanation for them. With this, I support the bill on behalf of YSR Congress Party and our Honorable Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy Garu. Thank you, sir. Thank you for माननीय giving me. मस्तान राव जी, माननीय श्री जी.के. वासन. Sir, I congratulate the minister, sir, for bringing this bill at an appropriate time. IIMs are proof that the Indian education system is par with the top business schools around the world, sir. But still, sir, we understand our ranking has to be improved, and I'm sure this particular bill will give more importance for bringing our rank
in the world level, sir. Today, sir, we are proud that our country caters the need of lakhs and lakhs of students, not only in India, but around the world for higher education, sir. This particular bill, the Act declares Indian Institute of Management as institutes of national importance and regularizing their functioning, sir. Especially, sir, the bill designates the President of India as visitor of every institute covered by the Act. This is very respectable, not only for the country, sir, for students who are going to study from all over the world, sir. Appointment and removal of IIM directors, sir, merit, discipline, transparency is in the bill, no doubt, sir. At the same time, appointment of chairman, chairperson of the board and governors. For this, the bill amendment to provide the chairperson of the board will be nominated by the visitor is a proper gesture, sir. Dissolution of the board, I would like to ask the Honorable Minister, dissolution of the board is very important in that the visitor is not involved. There should not be any controversy in the dissolution of the board. If it comes to the knowledge of the visitor, then it may be respectable. Coordination forum, incorporation of institute, for all this, sir, this bill gives a proper answer, sir. To conclude, sir, the need of the top uncompromised education is the future for the well-being and growth of our next generation, sir. This bill, I am sure, will further enhance the position of IIMs in the global ranking table. Thank you, sir. धन्यवाद मासन साहब. माननीय श्री सकलदीप राजभर, माननीय श्री सकलदीप राजभर, अनुपस्थित श्री वी विजय साई रेड्डी. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, I'll take only, I have 3 points to be brought to the notice of the Honorable Minister. Sir, I raised to support this bill, and it's a very good bill, and we appreciate the Honorable Minister for Education for bringing this good bill, sir. And the first point which I would like to bring to the notice of the Honorable Minister is reduced budgetary support for IIM, sir. Sir, in the past 7 years, 7 new IIMs have been added and created, taking the total count of IIMs in the country to 20 in number, sir. The bill seeks to convert even the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, to IIM, which should be appreciated, sir. Sir, however, there is a obvious mismatch between the increase in number of IIMs and the decrease in the, on the contrary, decrease in the budgetary support to them. Sir, in 2022-23, the budgetary estimate was initially, initial budgetary estimate was 654 crores, while it was reduced subsequently in the revised estimate stage at 608 crores, sir. Sir, in 2023-24, that is subsequent years, next year, the budgetary allocation for IIM stands at 300, which is half of the earlier years, sir. Sir, which is less than half of the allocation for the previous financial year. Sir, I request the Honorable Minister to ensure that adequate budgetary support is given to all the 20 IIMs because number has reached the 20, sir. Sir, the next point which I would like to bring to the Honorable Minister's notice is vacancies in IIM, sir. Sir, in March 2023, the close to 500 posts remain vacant in all IIMs across the country. These vacancies are concerning given that the sanctioned strength of IIM stands at 1,500, sir. Out of 1,500, if 500 posts are vacant, and we can imagine the situation and the situation of the students there in IIM, sir. Sir, it is more even concerning that 60% of the posts reserved for OBCs and SC faculty members in IIM remain vacant, and that the number is more than 80 in the case of posts reserved for STs, sir.
There is a need to ensure that IIMs are adequately staffed so as to maintain the highest standards of education, sir. In this regard, I would like to make one suggestion to the Honorable Minister. The point number 5 and sub-point of 5 of the statement of facts, which is enclosed along with the bill, sir, the statement of objects and reasons, amending section 29 of the Act relating to the committee, that is coordination form of institute. Because my colleague Amar Patnaik ji has raised this point also, sir. And in this regard, my suggestion would be to have a common recruitment board, and this coordination forum of institute comprising of all the members of all 20 institutes can can undertake the exercise of recruiting the adequate number of professors for IIMs, sir, for all IIMs and supervisory functions also, sir. And the last point which I would like to bring to the notice of Honorable Minister is domicile quota. The domicile quota which is there in all the law schools is not prevalent in IIMs. So I request the Honorable Minister to meet the local, to satisfy the local students, to ensure that there is a domicile quota be fixed in respect of the students residing in that area. So thank you very much. धन्यवाद माननीय श्री अब्दुल वहाब, माननीय श्री अब्दुल वहाब अनुपस्थित, माननीय डॉक्टर एम थुम्बेदुराई. Thank you, Vice Chairman, sir, for allowing me to participate in the bill introduced by Honorable Education Minister. That is the amendment bill seeks to further amend the Indian Institute of Management Act 2017 and provides for upgrading the status of National Institute of Industrial Engineering of Bombay, and also the Indian Institute of Management Act 2000 annexed view to declare certain institutions like Ahmedabad and Calcutta as the standard of excellence, national excellence. Sir, welcomable suggestions, sir, welcomable movement has brought. Sir, you know that education is concurrent subject. It is also state subject and also central subject, because the central has every power to enact laws. There is no objection to that. At the same time, our members raise that an issue, especially just I already said, when you are establishing this kind of institutions, local students, that local state people must be given the admission process, that given importance. Purely merit if you go, the purpose of establishing serious institution, different places as other places, Bangalore, Lucknow, so many. Prime Minister ambition is to see that local people also benefited. That is his aim. Modi ji's aim is to see when we are spreading this kind of institutions, the local people has benefited by getting the admissions. That spirit has to be in the running of the institution. That is what I am requesting. Sir, regarding this excellence, the autonomy, whatever they said, whether some members raised the autonomy of the institution is taken away by introducing this. Sir, this is what is the autonomy, sir? Autonomy is when government is funding, a lot of funding is giving, those institutions accountable to the government also. That is parliament. We are the parliament or assembly, whoever we are giving, that accountability must be there. Because in the name of autonomous, they cannot misuse it. Why? The allocation as fund has gone to these institutions. But what is happening actually is these institutions are charging very high fees now. They are collecting high fees. That is why poor people are not able to join these institutions. Therefore, in that respect, that is why I support this Vijay Reddy, what he said. The allocation must be given more and see that poor students also get admitted in that. Sir, regarding the excellency, you said, see, what is the excellency? I could not understand. The excellency, they are telling, even for some institutions are given, private institutions like VIT and the institution, another institution, so many institutions, excellency like that kind of experiment is coming.
Sir, this is given some concept attracting a foreign collaboration. For that there's institution allowed like that. But one dangerous thing is going on in that. Because our friend said that is Cambridge, Oxford, that maybe some institution may be good. But if you see the Western countries, especially Europe and USA and other people, the students' population is going down there. After +2, that is school education, they are not interested to go higher education. They are going to employment, going to distance education, like that they are going. That is the situation happening. In these circumstances, most of the institutions, due to population policy, because that marriage and population, sir, thank you very much, sir, as you come over. This problem. What is the Western countries, what is happening here? Due to this population is going down. So marriage is not certain place taking place, even marriage divorce is taking place, even marriage, children are not there. The population of the European, USA countries is going down because those institutions, except a few institutions, those institutions have no students there. Where they are getting, our Asian people are going. According to the statistics, 8 lakh students of Indian students are going abroad, or USA, UK, Germany, Australia, these are countries. At the same time, we are attracting only 30,000, 40,000 students from Afghanistan, Nepal, like that they are coming. Therefore, the standard in the name of ranking, they said that going down is only to see some kind of vested interest of the Western countries to belittle our institutions, like going rank like that, showing those institutions are high, therefore they are taking our students, they are going there. This is some kind of conspiracy is there. Therefore, just I want to make it finishing that. Therefore, when the excellency, when you are telling it, these excellency institutions must collaborate, it help to other institutions of our Indian, various institutions, IIMs, management institutes, the course conducted many institutions in India. Therefore, the standard has to upgrade what these institutions, excellence institutions, helping that if at all they are helping, you can give that standard. And you have to see that without this kind of sharing their knowledge on our experience to upgrade other institutions, there is no point of giving this kind of excellency. This is my view, sir. Thank you very much. Shri Kanak Medala Ravindra Kumar. Thank you, Chairman, sir, for giving this opportunity. Sir, the Indian Institute of Management Act 2017 itself was enacted with a view to declare certain institutes of management to be institutions of national importance, with a view to empower these institutions to attain standards of global experience in management, management research, and allied areas of knowledge. So in such a case, the present amendment bill intends to, number one, the very welcome proposal is the President of India shall be the visitor of every institute. Once the President of India is the visitor empowered to appoint one or more persons to review the work and progress of any institute. Sir, there is no clarity in this. The persons to be appointed, what is the eligibility criteria, and what are the standards to be taken into consideration, which is not defined in this particular bill. The another aspect is, the services of director may be terminated by the visitor in such manner as prescribed. Okay, whenever and under what circumstances director may be terminated, and what are the another things, and another the eminent persons to be nominated by the visitor as the chairpersons. Likewise, as far as the appointment of as a chairperson also, the eligibility criteria and qualifications are not being specified in this act. Coming to the other aspect, with regard to the amendment to section 939, the rules and bylaws of the National Institute of Indian Industrial Engineering, Mumbai enforces before the commencement of this so-and-so, shall continue to apply the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, will necessary modifications and adaptations so far as not inconsistent with the now modifications, and who are the competent to make legislation, and whether the rules are framed under this act, rule enabling power is empowered in this under the act amendment is not specified. The original act is not also clear in this aspect.
So apart from that, the standards of the Indian Institute of Management, the faculty has to be improved, vacancies have to be filled up, so quality of the standards have to be developed, and necessary number of strength, including the admissions with regard to the local students and are also to be taken into consideration as far as this institute is concerned. Finally, sir, to amend the section 19 is relating to coordination forum of the institute. What are the functions of the coordination forum, the institute? How to distinguish the functions of the management with regard to the coordination forum of the institute, whether to achieve what subject and object of this amendment act, whether it will serve the purpose are also not clear. It has to be clarified in this. Thank you, sir. I welcome the bill and support it. Shri Dharmendra Pradhan to reply the discussion. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अमर पटनायक जी से लेके रविंद्र जी तक 7 सम्माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है। मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने इस बिल को आज चर्चा तथा पारित करने का अवसर भी दिया, उसके लिए आपको भी सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, ये 2-3 विषय आज की चर्चा के अवसर पे मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सभी ने इस विषय का कॉग्निजेंस भी लिया है, सबने उसको समर्थन भी किया है। हमारे देश में 60 दशक से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जो रचना बनी है, जिसको एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत 2017 में मोदी जी की सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, शिक्षा विभाग के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से IIM की कल्पना की गई थी, लेकिन एक एक्ट के तहत मान्यता नहीं मिलने के कारण ये डिग्री अवार्डिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंसी उनके पास नहीं था। इसीलिए वो नोमेनक्लेचर उस अच्छे पढ़ाई के उपरांत उसको PG डिप्लोमा कहा जाता था। इस प्रकार के एक एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए मूलतः 2017 में उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस की दर्जा देना और उसको एक्ट से सपोर्ट करने में वो डिग्री दे पाएंगे, इसलिए 2017 को लाया गया था। उसी में लगभग आज देश में विभिन्न समय से आगे जाते हुए 20 IIM का निर्माण हुआ था। अभी आज आपकी अनुमति के उपरांत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, ये 1963 से ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट काम कर रही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक प्रकार से है। इनकी कोर कॉम्पिटेंसी लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, उसकी टेक्नो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में एक विश्व की अच्छे इंस्टीट्यूशन है। देश की सेक्टर की बहुत बड़े बड़े मूर्धन व्यक्तित्व तो उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के बाहर आए हैं। और इंडस्ट्री को बहुत वास्तविक अध्यक्ष जी, हमारे देश में इंडस्ट्री, एकेडेमिया और पॉलिसी मेकिंग की कोई एक बेहतरीन एग्जाम्पल है तो नीति मुंबई उसकी एक उदाहरण है। आज आपकी अनुमति के उपरांत भारत सरकार की जो ये पहल है, नीति भी IIM का एक कैटेगरी में आ जाएगा और हमारी सरकार मुंबई को भारत की अर्थनैतिक राजधानी, फिनेंशियल कैपिटल मुंबई में आज से, जब आपकी अनुमति के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति जी का मोहर लग जाएगा, तब हमें एक सौभाग्य मिलेगा, अवसर मिलेगा मुंबई में भी एक IIM है ऐसे कहने का। और फिर आप शीघ्र ही आप जाएंगे वहां की कन्वोकेशन में, और आपने अनुमति दिया तो कन्वोकेशन में भी आपको बुलाएंगे, निश्चित रूप में आपका मार्गदर्शन को मिलेगा। अध्यक्ष जी, एक दूसरी पक्ष है, सभी ने उस विषय को भी रिकॉग्नाइज किया कि आफ्टर ऑल 2017 में तो एक एक्ट आया था, 6 साल हो गया, इसमें परिवर्तन क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। सबने उसके मेरिट के बारे में कहा, सबने अपना अध्ययन भी किया है, इसीलिए सबने उसको, इस परिवर्तन को, जो 3 चीजों में हम परिवर्तन का मोटा मोटी माइन्यूट में मैंने जाते हुए 3 चीजों में हमने एक अमेंडमेंट की प्रपोज किया है। उसमें एक, इसको
हमारे देश में जैसे अमर पटनायक जी ने कहा कि आईआईटी भी उतनी ही बड़े ब्रांड है, आईआईएम तो है ही, आईआईटी भी उसकी इक्विवेलेंट, उससे बड़ा ब्रांड भी कहने से गलती नहीं होगी। आईआईटी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, हमारे देश में एनआईटी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, हमारे देश में स्टेम एजुकेशन बढ़ाने के लिए आइजर की कल्पना की गई है, 7 आइजर है, उसकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। 2017 आईआईएम एक्ट थोड़ा उसे भिन्न था। ये सारे की प्रमुख विजिटर होते हैं। हमने इस अमेंडमेंट में प्रपोज किया है आईआईएम का भी प्रमुख विजिटर होंगे, यानी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ही होंगे। उनकी दूसरा अमेंडमेंट यह मांग रहे हैं कि पहले जैसे सभी मित्रों ने कहा कि इसकी जो डायरेक्टर की नियुक्ति, उसके ऊपर उसकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनती थी, बोर्ड जो बनती थी, बोर्ड की मुखिया की नियुक्ति, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मेंबर और डायरेक्टर, ये सब सरकारी संस्था होने के उपरांत इनकी अकाउंटेबिलिटी सरकार के साथ नहीं है। इसीलिए आईआईटी में जैसे बोर्ड की गठन, बोर्ड की चेयरमैन की नियुक्ति और डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसकी एक सेटल प्रक्रिया सारे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की है और सब ऑटोनॉमी के साथ है, सब ऑटोनोमस है, सब एकेडमिक एक्सीलेंस उनकी रहे, इस पैरामीटर्स के साथ है। हमने इसको बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आइजर की इक्विवेलेंट आईआईएम को भी हमने विजिटर्स नॉमिनी आज बोर्ड ऑफ द गवर्नर की चेयरमैन, डायरेक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया और उनपे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आवश्यकता है तो लेने की समानता है इस बोर्ड में, इसमें हमने प्रपोज किया है। थर्ड विषय एक उसमें हमने प्रपोज किया है, ये सारे को संचालन करने के लिए कोऑर्डिनेशन बॉडी रहेगा। कोऑर्डिनेशन बॉडी के मुख्य भी एक पर्सन ऑफ एमिनेंस होंगे, उसकी नियुक्ति सरकार नहीं करेंगे, विजिटर करेंगे, यानी राष्ट्रपति महोदय करेंगे। सरकार पैनल भेज सकती है लेकिन विजिटर्स उसकी निर्णय करेंगे। ये मोटा मोटी एक हमने अमेंडमेंट लाया है। एक दो विषय शंका आई है, इसको थोड़ा मैं अगर आपकी अनुमति से उसको मैं क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा, क्योंकि वो विषय कहीं ना कहीं वो थोड़ा इसकी पक्ष विपक्ष दोनों विषय चर्चा में आ रही है। मैंने जो हमारे मित्र आंध्र प्रदेश की मस्तन राव बीरा जी ने एक प्रश्न उठाया कि आपने समर्थन उन्होंने किया है, उनकी पार्टी के नेता विजय साई रेड्डी जी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने एक प्रश्न उठाया, they raise a very fundamental issue, why you are getting into the autonomy area of institution. I think other member has enlightened that in their speeches, but I would like to clarify that. In other hand, he also raised question why weaker section students are not getting admitted to IIMs. It's a good question. Why the faculty member are not fulfilled to the desirable category? Vijay Sai ji also mentioned that. I agree with that. ये कैसे होगा? दो चीजें इकट्ठा नहीं होगा। हम इतना ही मांगते हैं, हम आईआईएम की कोर्स कैरिकुलम क्या होगा, किस प्रकार के लोग उनको पढ़ाने के लिए आएंगे, यह सरकार की विषय नहीं हो सकती है। यह उस डायरेक्टर, उसकी एकेडमिक काउंसिल, उसकी टीम की विषय होगा। लेकिन जो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जो हम लोगों ने, जैसे हमारी देश में संवैधानिक व्यवस्था में सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, ये सारे के एग्जिस्टिंग एक्ट है, रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस। ये आईआईएम में लागू होगा कि नहीं होगा? अगर अकाउंटेबिलिटी रहेगा तो पूछा जाएगा, सर नहीं रहेगा तो हम पूछेंगे किसको? वो कहेंगे हम तो स्वतंत्र हैं, हम ऑटोनोमस है। हमारे मानना है कि ऑटोनोमी आपको दिया गया है एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी आपको तो रखना ही पड़ेगा। आपने प्रश्न पूछा कि भाई आपकी वैकेंसी इतनी है, ये कई सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की समस्या है। मैं आपको एक आज आपने अवसर दिया, मैं थोड़ा आज पूरा सदन रहता तो एक महत्वपूर्ण बात पे अच्छा चर्चा हो जाता, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड आपकी उपस्थिति में स्ट्रेट करना चाहता हूं। जो लोग कभी सामाजिक न्याय की बात कहते थे, संविधान में कई बार लोग बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम लेते रहते हैं, रटते हैं। हमें कभी उनको याद करना, दिलवाना चाहिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एससी, एसटी, ओबीसी और बाद में
मोदी जी के द्वारा लाया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की आरक्षण सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में 2019 तक लागू नहीं था अध्यक्ष जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको कल्पना किया, उस ऐतिहासिक गलती को सुधारा और एक आंक लाया, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट टू 2019। उसके बाद आज रोस्टर मेंटेन हो रहा है। पहले था दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई सामाजिक न्याय का पूरा करने की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट सपोर्टेड व्यवस्था नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको व्यवस्था लाया। ये एक्ट भी आने वाले दिनों में सारे इंस्टीट्यूशंस में लागू होगा। आईआईटी में लागू होना शुरू हो गया है, एनआईटी में लागू हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू हो रहा है। कुछ राज्य वाले नहीं करते हैं, वो अलग बात है, यहाँ समर्थन करें तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। कुछ राज्य लोग सामाजिक न्याय को मानते नहीं है, वो कभी अलग बात करेंगे। लेकिन सर, जो विजय साई जी चिंता किए वो वाजिब है। ये एक्ट, विजय साई जी, दिस enactment, this amendment will strengthen constitutional position through parliament to ask, you can ask question, why you are not adhering the Central Educational Institutions Reservation in Teachers Cadre Act 2019. Now they will be answerable. Previously, they were not answerable. That was the reality. So this act is, अब 6 साल के बाद कई जो अनुभव आया, 6 साल के अंदर थोड़ा गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी को, पार्लियामेंट्री आंसरेबिलिटी को थोड़ा हनन हुई, इसीलिए ये अमेंडमेंट को लाया गया। फंडिंग की बात सभी ने कहा है। जो आईआईएम की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें भारत सरकार की लगभग 6000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अभी तक है। अभी आज भी जो व्यवस्था बनी है, हिफा की लोन कोई आईआईएम, विशेष करके ग्रीनफील्ड आईआईएम लेना चाहेगा उसको आज भी उपलब्ध है। वायबिलिटी गैप फंड की एक व्यवस्था आईआईएम की अंदर है, उसको जिसको जितना ड्यू था सबको सरकार ने दिया है। और आईआईएम अपना कोर्स फीस बनाए, अपना डिपार्टमेंट, अपना फीस स्ट्रक्चर बनाए, अपना रेवेन्यू जनरेशन करे, क्योंकि आईआईएम तो कंसल्टेंसी के माध्यम से अपना रेवेन्यू भी जनरेट करता है। बहुत आईआईएम अच्छा कर रहे हैं, सरकार उनको जो टाइमली मदद करना नया आईआईएम को कर रहा है, आगे भी करते रहेगा। फंड की कोई इश्यू नहीं है। हमारे देश में आईआईएम की एक विश्वसनीयता, एक ब्रांड आज दुनिया में, अध्यक्ष महोदय, Commission bill is coming. This will herald a new transformation in the area of dental health for 1.4 billion people, and it truly is been the time and necessary. Since I've got only 3 or 4 minutes and I have another speaker, I'll be quick. Honorable Vice Chairperson, ma'am, I'd like to come to the composition of the commission on clause 4 of this bill, which talks about having a chairperson, 8 ex officio members and 24 part-time members. I have a specific suggestion for the Honorable Minister that while the central government has included the Director General Dental Services as a member of the Dental Advisory Council, it is necessary to include the Director General Dental Services as an ex officio member of the National Dental Commission as well. I hope the Honorable Minister will take it kindly and will hope to include him also as an ex officio member. This is a humble request before the Honorable Minister. I'd quickly like to turn from the composition to going on to something that has been done on clause 11 of this bill, which is the Dental Advisory Council. Honorable Vice Chairperson, ma'am, Dental Advisory Council is extremely crucial because it heralds a new change today in the dimension and the thinking of dental health. And many a times the Dental Advisory Council, as we know, is going to be the platform where the states and union territories will put forth their views, their concerns before the Commission, which will help in shaping the overall agenda, policy, and strategy of dental health and dental support for this entire country. So it's an extremely welcome step, and I support the same. I therefore come to a very critical issue that has been flagged, which is the clause number 14 and clause number 15, which deals with the national eligibility entrance test and national exit test for dental streams. That has been clarified. This is a welcome step. There is continuity. I thank the Honorable Minister for ensuring continuity. By this clarification, which I believe Honorable Minister in his reply will also make,
thousands and lakhs of Indian students would not feel uncomfortable that now that the Dental Council is going, Dental Commission is coming, what are the steps, how will we go for examinations, that clarification is provided, that will help the students to feel more reassured. I'd like to come to clause 16 of the bill, Honorable Vice Chairperson, ma'am. There have been autonomous boards that have been created. It's a very good step. There are 3 autonomous boards, in fact, that has been created for this commission. I'd like to specifically talk about the first one, the Undergraduate and Postgraduate Dental Education Board, which would primarily focus and regulate dental education at undergraduate and postgraduate level. There is secondly, a Dental Assessment and Rating Board, which is for the first time has come up to carry out inspections, assess and rate the dental institutions, grant permissions, etc. And the third one is the Ethics and Dental Registration Board to regulate professional conduct, ensure ethics, and ensure that the dental profession is carried out along with the digital national register. I think these are extremely good steps. Of course, clauses 34, 35, 36, 37 talk about recognition, withdrawal, and re-recognition. Many such matters have been taken up. I would not want to take more time talking about it. There are live registers. I've just got a minute more. So I will just go to a couple of suggestions that I would like to make to the Honorable Minister. He is a very forthcoming and a very bright minister, and he's been taking this thing forward. Just like to talk about a couple of challenges that India faces today with respect to the dental community and the profession of dentistry. That while India may have achieved the recommended dentist to population ratio, it has come at a cost of massive privatization of dental education, new dental commission, and with the dental council being scrapped, this is going to be helped. Second, the undergraduate curriculum that forms the framework of dental education was revised last by the Dental Council of India in 2007. It's been 15 years. I hope the Honorable Minister will have this opportunity now with the new commission to look at it. And finally, our dental students are presently studying outdated clinical techniques. There are many new techniques that have come in. And the Dental Council of India, with all due respect to it, had not kept up to pace with the world and where dental techniques and dental surgeries and endodontics and many such sciences have come together and really transformed the entire arena of dentistry. So therefore, I'm sure with this dental commission, these new waves of dental dentistry and new waves of dental healthcare will be taken up, and especially in the undergraduate programs, these revisions in the techniques and the curriculum will help our students to go forward. Finally, Honorable Ma'am, most of its dental equipment from China, Switzerland, and Israel, and is the largest importer of dental equipment in the world. The top 3 importers of dental equipment in India are about 70,000 shipments. I'll just take 30 seconds and I'll close. By United States, Netherlands, and shipments. In the Make in India domain, I believe the Honorable Minister will coordinate with the innovation startups and see that in the dental healthcare framework also, there are many startups that are coming up with new technologies and equipment development. They would be able to undertake that. With these words, on behalf of the Biju Janata Dal and my leader, Shri Naveen Patnaik ji, we support the Dental Commission bill, and we hope it is going to harness a new era of dental health. Thank you. Dr. Sikenter Kumar. धन्यवाद मैडम। मैं आज जो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा योग विधेयक 2023 माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो सदन में लाया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपसभापति जी, 2014 के बाद जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, खेलों का हो, ज्ञान का, विज्ञान का, कला का, तकनीक का, हर एक क्षेत्र में 2014 से लेके अब तक ऐतिहासिक विकास हुआ है। और जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, तो स्वास्थ्य क्षेत्र भी मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। पूरे देश में
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, पूरे देश में इसका विस्तार हुआ है। और मैं एक छोटे से प्रदेश, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, और हिमाचल वासी जब एम्स की बात करते थे तो बड़े दूर दूर की सोचते थे कि दिल्ली सुनते थे हम कि एम्स है, लेकिन मैं तो माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे छोटे से प्रदेश को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ 1500 करोड़ रुपए का एम्स किसी ने दिया तो मोदी सरकार ने दिया। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, जो एक छोटे से हिमाचल प्रदेश को 8 मेडिकल कॉलेजेस, और पूरे देश की बात करूं, पूरे देश में एक अभूतपूर्व विकास स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, विश्व के बड़े बड़े देशों का कोरोना ने बेहाल कर दिया था, लेकिन पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा था कि 1.5 अरब का देश किस तरह से कोरोना पे काबू करेगा। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं मोदी सरकार को और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को कि उनके कुशल प्रबंधन से किस तरह से भारत ने जो कोरोना पर काबू पाया। और कोरोना पे काबू नहीं पाया, जो देश अपने आप को विकसित राष्ट्र समझते थे, उनको भी सहायता दी, और पूरे देशवासियों को जहां 200 करोड़ मुफ्त वैक्सीनेशन की, पूरे देशवासियों का स्वास्थ्य सुरक्षित किया। उपसभापति जी, ये जो नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 सदन में पेश किया गया है, 2020 में स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दंत चिकित्सा योग विधेयक के लिए एक प्रस्ताव रखा और प्रस्तावित विधेयक पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी। विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय दंत चिकित्सक योग एनडीसी की स्थापना करना और दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को रद्द करना है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा योग विधेयक 2023 का मुख्य लक्ष्य उच्च गुणवत्ता और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, देश भर में दंत चिकित्सा पेशे को विनियमित करना और सभी नागरिकों के लिए दंत स्वास्थ्य देखभाल की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक योग विधेयक 2023 को 1948 के दंत चिकित्सक अधिनियम को रद्द करने के इरादे से संसद में पेश किया गया है। विधेयक का उद्देश्य जहां डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को रद्द करना और राष्ट्रीय दंत चिकित्सक योग एनडीसी को एक अलग कॉर्पोरेट इकाई के रूप में स्थापित करना है, जो देश भर में दंत चिकित्सक शिक्षा और पेशेवरों की पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। विधेयक का उद्देश्य मौजूदा दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 की कमियों को दूर करना और वर्तमान कानून के भीतर प्रचलित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एनडीसी की शक्तियों और अधिकारों में वृद्धि करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की शुरुआत करके स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। मोदी सरकार ने लगातार निवारक दृष्टिकोण और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया है। विशेष रूप से एनएचपी 2017 दंत स्वास्थ्य के महत्व को संबोधित करने वाली पहली व्यापक स्वास्थ्य नीति थी, जिसे पहले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नजरअंदाज कर दिया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समग्र विकास पर जोर देते रहे हैं। यह विधेयक स्वायत्त निकायों की स्थापना करके और बहुस्तरीय प्रणाली के माध्यम से एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बनाकर दंत चिकित्सा के क्षेत्र के लिए भी ऐसा ही करने का प्रयास करता है। इससे सभी शिकायतों के त्वरित समाधान में हमें सहायता मिलेगी। हालांकि भारत की व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दंत स्वास्थ्य की अक्सर उपेक्षा की जाती है, लेकिन सरकार ने इसके महत्व को पहचाना है। 2019 की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी के आयुष्मान भारत कार्यक्रम में दंत स्वास्थ्य देखभाल शामिल थी और
व्यक्तियों को अपने दंत स्वास्थ्य की प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई थी। बजटीय आवंटन के संदर्भ में जबकि यूपीए सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 33,238 करोड़ आवंटित किए थे, मोदी सरकार ने इसे 2023-24 के लिए 86,175 करोड़ तक बढ़ा दिया, जो यूपीए की तुलना में लगभग 159% अधिक आवंटन है। मोदी सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई के प्रतिस्थापन के रूप में एनएमसी की स्थापना करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा योग अधिनियम 2019 लागू किया। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत एनएमसी ने पूरे भारत में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच बढ़ाने और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। एमसीआई को भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी के मुद्दों का सामना करना जो पड़ता था, जो कई दशकों में यूपीए के शासन के दौरान बदतर हो गया। इसी तरह एनडीसी विधायी का लक्ष्य दंत चिकित्सा देखभाल क्षेत्र में समान परिवर्तन लाना है। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के उपेक्षित क्षेत्रों को संबोधित करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनके प्रयासों में स्पष्ट है। 2022 की बजट प्रस्तुति में माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पहल के लिए धन आवंटित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को 24 आवर्स की सुविधा प्रदान करता है। दंत चिकित्सा देखभाल क्षेत्र में सुधार पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान भी आश्चर्यजनक नहीं है। जहां पिछली यूपीए सरकार ने आम आदमी के स्वास्थ्य की उपेक्षा की, वहीं मोदी सरकार स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए लगातार अतिरिक्त प्रयास कर रही है। मोदी सरकार विभिन्न स्तरों पर डिजिटल माध्यमों से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। दंत चिकित्सकों के राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टरों को डिजिटलीकरण करके धोखाधड़ी प्रथाओं की घटना को रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य नियमित निगरानी और एक कुशल शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से दंत चिकित्सा क्षेत्र में सभी गड़बड़ियों को खत्म करना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कई डेलीगेशन जो दंत व्यवसाय से जुड़े हैं, उनकी कई मांगे थी, वो जब ये बिल आज सदन में पास हो जाएगा उनका भी समाधान होगा। मैं उनको भी बधाई देता हूं और आपका भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि बिल का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Shri S. Niranjan Reddy. Madam Vice Chairperson, I rise to support both the bills, which is the Dental Commission Bill and the Nursing and Midwifery Commission Bill. If I may first speak on the Nursing and Midwifery Commission Bill, the reason I support the bill is because the legislation, Madam, as I see it, is both fluid and modern looking. I say this because the legislation looks ahead. It also looks across other enactments when it is making provisions under this act. Madam, when I say it looks ahead, clause 10 specifically requires, the act requires the commission when it is conducting its affairs to ensure that this nursing industry would be subjected to cutting edge technology and hybrid education requirements, so that the commission will now ensure that the curriculum will have this. It also very importantly provides for certain soft skills development also to be taken into account. Now this is very important, Madam, because in the modern age of artificial intelligence, one kind of jobs that can never be changed are jobs like nursing and midwifery, because no artificial intelligence can do this. When you're looking at a large scale displacement, when you look at these kind of jobs, these are the skills that normally the legislations don't tend to look at. So I would like to commend the government and the Honorable Minister for bringing out a legislation that is so all-encompassing. When I say that it also looks across other laws, it provides, Madam, in clause 18 that it would align
with the needs of national health program. And in one of the clauses, clause 10, subclause 4, it provides for a interface with different medical fields to see what is the requirement of nursing staff and midwifery staff across various sectors. So this is a very, as I say, Madam, a very fluid bill, which is the way the legislations ought to be. So I would commend the government. Now, I feel, Madam, that this legislation might empower the Commission and the government to deal with the challenges that may be faced by the country in terms of the staff requirements for nursing and midwifery. Madam, first, India is now at the hub of medical tourism. Potential is likely to tremendously grow. Second, Madam, I find that even within India, there is a huge demand for nursing sector with the requirements of medical infrastructure going up. So the new bill might enable that this ecosystem is built in very quickly for ensuring that the requirements are taken into account. Having said this about the bill, there are 2 or 3 things that I may want the central government to focus on. Madam, I find that the nursing sector is a little skewed in terms of a few of the sectors being underserviced. So for instance, Madam, in Northeast, entire Northeast India, there are only 2% of colleges, nursing colleges which are there. So I would think, because this is unlike an engineering and medical courses where people will be able to travel far, a localized nursing sector close by might help. The other concern that I wanted the Honorable Minister to kindly show some attention on is that while this is largely female dominated, it seems that the leadership is skewed in favor of male leadership up till now shepherding this particular sector. I would request the Honorable Minister to consider it. Madam, now that I am concluding my speech, I just wanted to make 2 quick points on the Dental Commission. This is taking inspiration from the Medical Commission Act, a very salutary bill, so we support it. In the working of Medical Commission, I have found that there are 2 areas which may be considered by the central government. First, we find, Madam, that unlike nursing and medicine, in dental sector, India is now facing an oversupply. We have now crossed the World Health Organization requirement of 1 dentist for 5,000 people. We now have for 7,500 people. Please conclude. Just 1 minute, ma'am, because there are 2 bills. Just only 1 more minute. So there is a Niti Aayog recommendation. Madam, just give me 30 seconds. I'll conclude. There are other speakers. Yes, madam. Only 30 seconds, 2 quick points. There's a Niti Aayog recommendation that a bridge course can be done so that some of these dentists can be trained to become the basic medical practitioners of providing primary health care. The government may consider it. Then both in Medical Council and in Dental Council, Madam, I find that the Dental Assessment and Rating Board, which is equal to the Medical Assessment and Rating Board, the government has very importantly provided that these functions can be carried out by independent accredited agencies. The National Medical Commission has not accredited any agencies. I'm suggesting that so that the commission will be able to focus on more important issues, if these accredited agencies can be quickly identified, they will carry out the inspection. It can be supervised by the National Medical Commission or the Dental Commission. I thank you, Madam, and I support both the bills. Thank you. Dr. M. Thambidurai. Thank you, Vice Chairman, Madam. Because we are embarrassed to take 2 bills together, which have different aspects. We have to discuss it. But anyhow, the chair has decided we have to bound for that. I am speaking that. Because Dental Council is separate, this is very important subject I want to discuss. But anyhow, sir, Madam, here, Honorable Minister brought certain changes in the council. I welcome that. I am not objecting that. Establishment of a National Dental Commission, the place of Dental Council of India. I appreciate that what he has correct. But the point which is, another point is we are having not able to accept that. Single national entrance examination. So state subject, Madam, health is a state subject. Education was concurrent list. In our Tamil Nadu, still we are not able to accept the NEET examination because it is making more a commercial thing. Instead of all the higher education institutions, they are even all NEET examination centers are flourishing.
Therefore, I raised many times, even our committees, this kind of neat coaching centers must be banned. The government has to come forward, ban such kind. Otherwise, the syllabus which we are present national education policy for the school education, students, nobody is attending that. The same way you are bringing once again national entrance examination you are bringing, the students will go to the entire coaching centers only. There is encroaching the state subjects also in that. Therefore, as far as the Tamil Nadu is concerned, we are our ADMK party. We are not for NEET examination, and also the single entrance examination for the dental council also. Dental also. That is where we are objecting that. Second thing, so I know I raised many times with the honorable minister. These central bodies, certain bodies, for example, pharmacy council, they are not allowing to start any institutions. Then other bodies want to start, where to the Supreme High Court, as a Delhi Court and Supreme Court, we have to go there. From the direction only, we have to be able to start. Why this kind of councils are keeping their powers, not allowing others to start? Our Honorable Prime Minister wants to establish more institutions, more medical colleges, each district you want to establish. His aim is that. Same in nursing courses also must come forward in India. That is a Modi's dream. But when that is the case, why these kind of council they are not allowing? Same way, dental council also. Dental council not permitting any new medical colleges. This is another problem. Therefore, let our minister consider these things to see that this kind of council must not take more power. Even though government is interested, state and central government started institutions, they are not cooperating. Therefore, what sort of power they are having, we don't know. In this amendment, whether we will come overcome. Just now, that is why he said this bill bringing together, we cannot speak anything. Especially nursing is a very important subject. You are, madam, you are a madam. You are sitting there. It's a motherly thing. You are sitting there. This nursing is our side. Our honorable say industry. It's not an industry. It is a service, motherly service. Mother is only can protect. God has given the power to you people, patient, not putting bill Sir, always like that. We're putting bill means it is you are asking you to sit down. Therefore, you have to be patient. Sir, you have 40 seconds to conclude. You have to be patient to see that nursing is very important subject. Our Indian people only serving through the world. If you go America, who is the nurse from Kerala may be there. That is their specialty there. Our human research development is the asset for the Indian country. Education is very important. Health sector important. Agriculture. 3 sectors only Indian can flourish. For the other things, whatever said, China is encroaching our industries means that kind of competition will be there. But why I'm telling, sir, I once again requesting only final point I'm putting. I request the Honorable Minister, let the courses come, new courses. Either state government also on the way not to allow to start allied courses, putting applications, many people are putting, they are keeping quiet. In Tamil Nadu, they are not allowing the health ministry to allow to start any new courses. Let the central government interfere that to allow this kind of course system. Thank you very much. Madam, I stand here to support both the bills on behalf of my party, ma'am. Number one, when we talk about Nursing and Midwifery Commission Bill 2023, naturally, ma'am, we are bound to think of COVID-19, the service of nurses to the common people of India. They have saved lakhs and lakhs of people in our country, and many have sacrificed their life because of COVID-19. We have to be ever thankful to them, ma'am. Coming to the point, ma'am, nursing and midwifery professionals in the country are facing several challenges due to lack of educational qualification. Furthermore, uneven distribution of nursing institutes and the gap in the quality of teachers and nursing curriculum subjects. These professionals lack of opportunities and forces them to out-migrate to different fields to private sector. This has resulted in an acute shortage of nursing staff. So I kindly request the minister that this has to be rectified.
This particular bill, I well understand, ma'am, proposes to remove the currently governing Indian Nursing Council Act 1947 and replace it with the National Nursing and Midwifery Commission. The INC Act, I am sure, will be responsible for ensuring the educational standards, minimum entrance requirements, prescribing curriculum for nursing courses, ma'am. I'm sure this will solve their problem, and this particular bill will bring limelight to them. Coming to the National Dental Commission's bill, the bill aims to legislation to improve and revitalize the field of dentistry by repealing the Dentist Act of 1948 and dissolving the Dental Council of India, ma'am. Quickly, I want to finish. I'll just tell 2 points. One, the benefits, promoting uniform and excellent dental education. Two, fostering ethical and professional dental care. Three, encouraging innovation and research. Four, fortifying dental education and practice. At the same time, ma'am, to the Honorable Minister, I would like to tell certain areas which require further deliberation. Number one, representation and autonomy. The bill raises concern regarding the significant empowerment of the central government through its authority to appoint the chairperson and ex officio members of the NDC. Some worry that this heavy reliance of the central government for the selection of all commission members could result in an undue concentration of power and control in the hands of the central government, which has to be taken care. Two more important points, ma'am. One is feasibility and cost effectiveness, which is very important. Establishing a district dental commission when a national medical commission already exists to oversee a branch of medical encourages a multi-yard bureaucratic system. Creating new commission, particularly during economic downturns, will have multiple challenges. I'm sure the minister will take care of it. The last important point is lack of attention to dental auxiliaries. The Dental Act 1948 recognizes two categories of auxiliaries, dental hygienists and dental mechanics. However, the present situation is unfortunate with only 6,605 auxiliaries in India, indicating neglect of these allied health professionals. The current bill overlooks the crucial role of dental auxiliaries and failed to provide adequate acknowledgement and definition of this role. With this, ma'am, I'm sure the minister will do the needful for this profession. With this, I support this bill. Thank you very much. Shri Bhubaneswar Kalita. Thank you, Madam Vice Chairman, and I'm very happy to see you in the chair and congratulate you. I rise to support both the bills, the National Dental Commission Bill 2023 and National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023. Madam, while dealing with both the bills, I will first speak on a few points on National Dental Commission. At the outset, I congratulate the government led by our Prime Minister, Sri Narendra Modi, and also congratulate the Health Minister, Sri Mansukh Bhai Mandavia, and his team in the Health Ministry for bringing revolutionary changes, very significant changes in the healthcare system of this country. Madam, we have seen a lot of achievements and a lot of change and transformation in the healthcare system of this country. And if I'm not going to count all of them because that I will not have that kind of time because I love to speak on the bill also. So, but I must congratulate him that the National Dental Commission Bill 2023 has been brought after the original bill was 1948, and after 75 years of this bill has come. So I congratulate the minister that he thought about it. And before this, he brought
the National Medical Commission Bill 2019, which is again after long gap of the original bill. So I congratulate both of them for taking this initiative to bring the changes into the healthcare system of our country. Madam, to start with the National Dental Commission Bill, it has dealt with the discrepancies and weaknesses of the original bill of 1948, and the objectives being this bill is replacing the 1948 bill, and it aims to improve access high quality and affordable dental education, ensure availability of dental professionals and services throughout the country, conduct periodic and transparent assessments of dental institutions, facilitate the maintenance of National Dental Register, and enforce high ethical standards in all aspects of dental services. Madam, and with that end in view, the Dental Council has been replaced by the National Dental Commission, and here the Dental Commission has been formed with which will be chaired by Cabinet Secretary, and there will be ex officio members, presidents of 3 autonomous boards, Director General of Health Services, Chief of the Center for Dental and Educational Research at AIIMS. Madam, it will include part-time members also. Here I have to make some suggestions, because the part-time members are normally taken from the fraternity. And as you see, if the commission is flooded with the people from the fraternity only, the views of independent views doesn't come. So in formation of the commission, it should be taken care that independent views come over there also, with experience of the present day healthcare system. Madam, the functions of the National Medical Commission has been regulating governance standard for dental education, examination and training, regulating dental institutions and research, accessing infrastructure requirements in dental healthcare, ensuring the admissions of to Bachelor of Dental Surgery happen through the NEET exam. Madam, here the original bill 1948 was nearly silent, but this bill has brought clarity to the entire system of dental education and dental training. So I appreciate I appreciate the minister and the health ministry for thinking about it to revolutionize the entire healthcare system. Madam, we know that health is a state subject, but when our Honorable Prime Minister took over, Sri Narendra Modi ji took over, it has revolutionized the system. Most of the initiatives that are seen today in the healthcare system of the country, most of the systems are, most of the initiatives are taken by the central government. Although I am not condemning the state government, they are also doing it. But from COVID onwards and before that also, and bringing these new bills with a new outlook has been brought by the central government only. For that, I congratulate the minister, because these all initiatives are mostly coming from the central government, which are being followed by the state governments and revolutionize the healthcare system. Particularly during the COVID, we have seen the initiative by the Honorable Minister, and with the guidance of our Prime Minister, that a pandemic like which was never seen in the world, COVID, was tackled very efficiently, which is being appreciated abroad, all over the world. And the new
areas that has been covered up. Now, as you see, somebody mentioned about the mental health. After the COVID, one thing that has come as a new phenomenon is mental health. And also, of course, that sudden heart attack. So these are areas where the ministry is studying. So far, our committee is also studying, making a study on all that. And I hope that these areas will be covered efficiently by the ministry. And while coming to the Ethics and Dental Registration Board, Madam, in every legislation and every field, ethics is one area which is very necessary, because even in the original bill, this was mentioned about the ethical area has been was mentioned here. As we see that the Ethics and Dental Registration Board maintains online national registers of dentists, dental auxiliaries, regulates standard of conduct, ethics, and scope of dental practice, suspends, cancel licenses of dentists for misconduct or unethical behavior. Madam, this is a very sensitive area, and the unethical behavior, how it will be judged and how it will be determined. So here the ministry has to, all-round minister has to give some more attention into this, so that this is specified. There is another in section 37, the recognition of dental qualifications granted by institutions outside India. Madam, as you have seen, Ukraine war and many other unrest in the world has seen that the Indian students studying medical in medical institutions abroad have some issues with that. They have come back. If their degrees are de-recognized and if they cannot practice, their entire family support will go, because they have gone with the family support or bank support and come back, they cannot repay the bank. So I think this ethical commission will put more attention into it. And a few words on the establishment of medical education institutes. I really, this country is happy that every district is going to have a medical college. But at the same time, it will have one nursing college also. In the last budget, Honorable Prime Minister has declared that along with the medical college in every district, there will be a nursing college. Madam, you are quite aware that the nursing institutes in Northeastern region are very few. Although many in number nurses comes from Northeastern region, and there is great demand abroad also. Because of their English language and their sincerity and discipline, they are needed. Every other country needed all of them, and there is great demand. But I'm not saying that we should send all of them abroad, and then we'll have shortage of nurses in our own hospitals. So I think the ratio or the balance will be made. A mechanism can be established which will maintain the balance between nurses going abroad and nurses demand for nurses in our own country. So I have nothing much more on nursing and midwifery bill commission bill. With this, I thank and congratulate Honorable Prime Minister and Honorable Health Minister and his team in the Health Ministry. Thank you very much. Srimati Mamata Mohanta. It's a very good day that धन्यवाद 100% भाइस चेयरमैन scenario is governed by ladies, महिला पूरा मंच पे और नीचे टेबल. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद वाइस चेयरमैन महोदया. मैं मेरे पार्टी बिजू जनता दल का तरफ से दी नेशनल नर्सिंग एंड
मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 के आलोचना पर भाग ले रही हूँ। महोदया, दुनिया में सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं है। इस सेवा क्षेत्रों में जुड़े सभी को मैं इस पवित्र गृह से नमन करती हूँ। सेवा का नाम लेते ही पहले मदर टेरेसा का नाम आती है। सेवा के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। ये बात सेवा क्षेत्रों को कितना गुरुत्व मिलना चाहिए वही बताता है। इस सेवा क्षेत्र से जुड़े सभी सेवक और सेविका के लिए कुछ करने के वक्त आया है। महोदय, इस राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 लोकसभा में पारित हुआ है। ये भारतीय नर्सिंग काउंसिल अधिनियम 1947 में संपर्कित है। यहाँ नर्सिंग और मिडवाइफरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी के शिक्षा, सेवा और उन्नत मान का गुरुत्व दे रहा है। इस बिल में इन सभी क्षेत्रों के लिए गठित कमीशन में 29 सदस्य रहेंगे। इस कमीशन के अध्यक्ष नर्सिंग और मिडवाइफरी क्षेत्रों में स्नातक समेत 20 साल का अनुभव रहेगा और बाकी सदस्य स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्षेत्रों से रहेंगे। इस कमीशन शिक्षा नीति प्रस्तुत करेगी। शिक्षादान केंद्र की नियमित जांच, शिक्षादान केंद्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुधार के लिए अध्यापक का नियुक्ति आदि विभिन्न स्तर पर नजर रखेंगे। केंद्र सरकार एक परिषद स्थापन करेगी। ये परिषद राष्ट्रीय काउंसिल को उपदेश और सहयोग करेगी। महोदय, बिल के हिसाब से इस कमीशन के अधीन 3 बोर्ड गठन होगा जो परीक्षा, शिक्षा केंद्र का रैंकिंग पर और शिक्षा नीति, स्वास्थ्य क्षेत्रों के ऊपर नजर रखेंगे। सभी राज्यों के एक कमीशन गठन होगा जहां 10 सदस्य रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र, नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग क्षेत्रों में काम करने वाले सदस्य रह सकते हैं। राज्य के कमीशन राष्ट्रीय कमीशन के हिसाब से सभी राज्य करेगा। इस कमीशन गठन होने के बाद कमीशन कार्य शुरू होगा तो अभिज्ञता प्राप्त सेवक या सेविका अभिज्ञता सेवक या सेविका आएंगे जिससे सभी को उन्नत मान का सेवा मिलेगा। इसके साथ सेवा का प्रकृत मूल्य सब समझेंगे। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगी इस महत्वपूर्ण बिल को राज्यसभा में आगत करने के लिए। इस बिल को मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। श्री वी विजय साई रेड्डी। Thank you, Vice Chairperson, Madam. Madam, both National Nursing Commission Bill 2023 and National Dental Commission Bill 2023, both the bills are at another progressive legislations and about the bringing crucial reforms in the medical sector. I, on behalf of my party, YSR Congress Party, and my leader, congratulate Mansukh Mandaviya ji and support the bills, both the bills. Madam, I have only 3 points to be brought to the notice of the Honorable Minister. The first point is the 85 to 90% of the adults have got the dental cavities, including myself. I also have got the dental. It is no fault of the minister, but still I am bringing it to the notice. Along with about 60 to 80% children, madam. Over 50% of the Indians with dental health issues receive treatment advice from some other dentists, such as chemists, and not really dentist, chemists, madam. This is the problem. In 2020, India achieved more than ideal dentist to population. Number of dentists to that of the population proportion ratio is about 1:5,000 as against 1:7,500 recommended by WHO. It's really good. Madam, however, there is a great urban-rural mismatch, which I would like to bring to the notice of the minister, with the ratio reaching 1:1 lakh, 1:1 lakh, urban-rural mismatch. There's a severe lack of awareness about the mental and oral health and disease in these rural areas, and access to the education is lower in the rural areas, madam. I have one suggestion to be made to the minister. Madam, National Dental Commission
should take the initiatives to assign each dental college to each rural area, every rural area, and appoint one dentist for each primary health center, as the dentists play a key role in educating the rural people. This is the suggestion what I would like to make to the Honorable Minister. And the second point which I would like to bring to his notice is there are startling vacancies in the dental colleges, not the hospitals. There are vacancies, which means that we are not able to absorb the dental students into the system. Of the 1,89,420 seats offered between 2016-17 and 2022-23, 36,585, almost about 20% remain unfilled. This concerning trends extend to both UG and PG dental courses across the country, madam. I request the Honorable Minister to take care of to address this issue. Why colleges are not able to fill the vacancies for the students, seats for the students. Taken are implemented in this regard. I request the Honorable Minister to take care of these issues. And for the last point, madam, particularly the nurses, the nursing, insofar as nursing is concerned, given the nursing profession is largely dominated by women, they are subject to host of problems at the workplace, including sexual harassment. I urge the minister to outline, because they may not be able to express, this is the problem which is prevailing throughout the country. I urge the minister to outline how these concerns about the workplace conditions for nurses will be addressed. Thank you very much, madam. Shri Kanaka Medala Ravindra Kumar. Thank you, Deputy Chairman, Madam, for giving this opportunity to speak on the bills. National Dental Commission Bill and National Nursing and Midwifery Commission. Sir, this bill, Madam, this bill provides, Wide Section 4 speaks about the composition of National Dental Commission. As per the provisions of Section 4 of the bill, there is no place for states in the composition of National Dental Commission. And states will be represented in the National Dental Commission only as a part-time members. That too, not all the states. Only 10 members on rotational basis. But the procedure for appointment and eligibility criteria for appointment of such members have not been specified in the Act. The 10 members who will be nominated by the states and union territories in Dental Advisory Council on rotation basis from among the nominees of the states and union territories under clause C and D of the subsection 2 of 11 of the Dental Advisory Council. The bill has no provision for containing and prescribing the procedure with regard to that. The procedure will be prescribed later under the rules that will be framed by the executive. Act is in vain. But 9 members to be appointed on rotational basis from among the nominees of the states and union territories under clause E of subsection 2 and section 11 of State Dental Council. So to be a member of in the National Dental Council, one has to be first be a member of either Dental Advisory Council or State Dental Council. Then only their respective name will be considered for the membership in National Dental Commission. Not all the members from the state and UT will become a member of National Dental Commission. Some will be selected on rotational basis. These procedural aspects and creates some doubt, and it has to be clarified. It is in vague. And so the students with regard to the get admission to dentist course after writing NEET examination conducted as per the National Medical Commission Act. They give yearly exams during the pursue their UG course. The bill provides, again, then the bill provides for provision of national exit test. As per the provisions of this section, the student pursuing common undergraduate dentist course will have to clear national test to get license for practice of dentistry. So this bill provides multifarious procedure, and also
the aims and objects of this act, originally an expert committee was constituted, and subsequently department-related standing committee also recommended with regard to the provisions. But there are constitution of National Dental Commission, and also there are 3 autonomous bodies, namely Undergraduate and Postgraduate Dental Education Board. Likewise, Dental Assessment and Rating Board, Ethics and Dental Registration Board to regulate professional conduct. Likewise, there are certain ambiguity with regard to the qualified and eligibility of the respective committees to nominate it and to select them by the government. Likewise, the Sir, please certain conclude. principles, Please certain conclude. principles have to be followed. 1 minute. 30 Educational seconds, standards. please conclude. Final 1.5 minutes. Educational standards, training centers, creating infrastructure and faculty standards, and increasing the number of institutions and training centers, and qualifications and eligibility criteria have to be looked into. While finalizing this bill, the Honorable Minister has to take care of and address all these problems. Thank you for giving this opportunity. Dr. Mansukh Mandavia to reply to the discussion. Deputy Chairman Sir, नेशनल डेंटल कमीशन एवं नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन बिल आज सदन में 9 सदस्यों ने बिल के समर्थन में अपनी बात रखी। जो सदस्य अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं, सभी ने समर्थन दिया है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। सुस्मित पात्रा जी, डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, एस निरंजन रेड्डी जी, एम थम्बी दुराई जी, जी के वासन जी, भुवनेश्वर कलिता जी, ममता मोहंता जी, विजय साई रेड्डी जी और कनक मेटला रविंद्र कुमार जी, सभी ने अपनी महत्वपूर्ण बात रखी है। विषय डिप्टी चेयरमैन सर ये है कि हम हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से बदलाव कर रहा है, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं, वो कभी टोकन में नहीं सोचते हैं, और देश की समय स्थिति के अनुरूप क्या करने की आवश्यकता है। मोदी जी ने अपने पंच प्राण को बताते हुए रेड फोर्ट से कहा था कि हमें विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है। हमारी विरासत क्या थी, हमारी क्या विरासत है? विरासत से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़े तो हम हमारी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम सब लोगों ने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा, सारी दुनिया में, मैं तो उस वक्त सारी दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था, बात कर रहा था, सभी विश्व के हेल्थ मिनिस्टर के साथ दैनिक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिन बात होती थी। दुनिया को आश्चर्य था कि हमारे यहाँ लॉकडाउन के सामने एजिटेशन चल रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, हमारी नर्स ड्यूटी पर नहीं जा रही है, हमारे पैरामेडिक स्टाफ ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं। वैसी स्थिति में इंडिया में डॉक्टर भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, नर्सिस भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। केवल सेवाएं नहीं, अपने प्राण की बिना परवाह करे वो देश के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त कर रहे थे। ऐसे मेरे डॉक्टर्स, ऐसे मेरे सभी नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ को मैं आज पार्लियामेंट के फ्लोर से अभिनंदन करना चाहता हूं। और उस वक्त मोदी जी ने उसको विरासत से प्रेरणा ली। विरासत क्या थी हमारी? हमारे देश में हेल्थ एक कभी कॉमर्स नहीं है, और कोई कंट्री के लिए, दुनिया के लिए हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ एक सेवा है। और इसलिए ये देश की जनता में सेवा भाव को प्रोत्साहित करने से हमें फायदा होगा, या तो उसका बेसिक, उसका मन को हम कंट्रोल सकते हैं। मोदी जी ने उस वक्त
हमारे हेल्थ वर्कफोर्स के लिए ताली बजाई थी, थाली बजाई थी, आकाश में ट्राई कलर से उसको अभिनंदन किया था और उसके जवाब में हमारे सारे देश के कोरोना वॉरियर्स लगे और देश को कोविड क्राइसिस से बचा लिया। ये हमारी विरासत है और विरासत से प्रेरणा लेके हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ बदलाव करते हैं। क्या बदलाव करने की आवश्यकता है मेडिकल एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में? जो भी बदलाव करना है एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ। हमने केवल डिस्पेंसरी खोलने की बात नहीं की। भूतकाल में होता था, मांग आई तो डिस्पेंसरी खोल दो, जी नहीं, हमने डिस्पेंसरी भी खोली, लेकिन जब हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लास्ट माइल के व्यक्ति को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर उपलब्ध करानी है, तो उसके लिए हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1,56,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो बन गया, लेकिन वहां डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर चाहिए तो हमें मेडिकल की सीट भी बढ़ानी पड़ेगी। और मैं आपको ये फ्लोर पर बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले 54,000 एमबीबीएस की सीट थी, आज 1,07,000 एमबीबीएस की सीट बन। आज मेडिकल एमबीबीएस की कॉलेज 350 थी, आज 704 एमबीबीएस की कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। एक क्यों किया? हम मानते हैं कि हमें डिस्पेंसरी चालू करनी है तो हमें मेडिकल कॉलेज बढ़ानी होगी, हमें डॉक्टर बनाना होगा। डॉक्टर बनने लगा और उसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन हम अच्छा, बेहतर और विश्व की आवश्यकता के अनुसार, देश की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर का भी निर्माण करें और स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन भी दे। नॉट ओनली फॉर एमबीबीएस या मेडिकल एजुकेशन, बट नर्सिंग इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। डेंटिस्ट्री इज वन पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये सब मेडिकल एजुकेशन का, एलाइड हेल्थ सर्विसेज इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये सब मेडिकल एजुकेशन का एक पार्ट है और देश की रिक्वायरमेंट को भी हमें ध्यान में रखना है और दुनिया की आवश्यकताओं को भी हमें पूरी करना है। उसके लिए जो एक होलिस्टिक का एफर्ट हमने लिया है, इस एफर्ट के फलस्वरूप हम सबसे पहले नेशनल मेडिकल कमीशन लाए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। उसके बाद एलाइड हेल्थ सर्विसेज बिल लाए, एलाइड 56 टाइप की हेल्थ सर्विसेज के को रेगुलेट करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल मैन पावर तैयार करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन का किया। उसको आगे बढ़ते बढ़ते हम आज डेंटल कमीशन बिल और नर्सिंग मिडवाइजरी बिल लेके आए हैं और उसके लिए बहुत बड़ी, उसके लिए रिकमेंडेशन भी हुई है और मेंबर ऑफ एक्सपर्ट कमेटी 2013 में बनी थी और पीजीआई चंडीगढ़ के एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि सभी एजुकेशन के लिए आपको स्वायत्त कमीशन बनाना होगा। जो काउंसिल चल रही है उसके जगह पे आप कमीशन बनाओ, ऐसी रिकमेंडेशन की थी। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2017 में 109वीं रिपोर्ट में भी कहा था कि सभी विभाग के सभी इस सेक्टर के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग कमीशन होना चाहिए और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनाई गई थी। उसमें भी बात रखी गई थी कि सभी हेल्थ सेक्टर के लिए अलग कमीशन का प्रावधान हो। उसको देखते हुए हमने 2 कमीशन लाए और तीसरा कमीशन हम आज लेके आए हैं। ये लेके आने के लिए क्या ये उसको क्यों अनुशंसा करनी पड़ी, मैं इस फ्लोर पर बताना चाहूंगा कि समय के साथ बदलना बहुत आवश्यक होता है। समय के साथ हम ना बदलाव करें तो हमें पीछे रहना पड़ जाता है और इसलिए हम स्टैंडर्ड एजुकेशन कैसे दें। नर्सिंग का स्टैंडर्ड एजुकेशन, क्योंकि सिनारियो बदल गया। डेंटिस्ट्री पहले केवल टीथ निकालना था, अभी बहुत उसमें बदलाव हो गया। अलग अलग टाइप की एक्सपर्टाइज आ गई, अलग अलग टाइप के डेंटिस्ट्री में भी अलग अलग विभाग के एक्सपर्ट होने लगे। उसके लिए एजुकेशन सिलेबस तैयार करना, उसके लिए कोर्सेज चालू करना, उसके लिए सीट का प्रावधान करना और उसके लिए जो बदलते समय की आवश्यकता है उसको कैसे हम फुलफिल करें, उसका भी विचार करना आवश्यक था। उसको आज स्थिति ऐसी थी, जो काउंसिल, हम सब लोगों ने मेडिकल काउंसिल की स्थिति देखी थी और आज मेडिकल काउंसिल में और उस वक्त मेडिकल कमीशन में और काउंसिल में क्या फर्क पड़ गया। काउंसिल में जो लोग स्थापित लोग थे, कैसे भी करके इलेक्टेड होके आ जाते थे। 10-10, 15-15 साल से वही लोग इलेक्टेड होके आते थे, अपना ग्रुप बना लेते थे और स्थापित हित हो जाते थे। उससे बहुत मेडिकल काउंसिल की स्थिति बिगड़ गई थी। आज कमीशन के रूप में
बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। मेडिकल कमीशन के द्वारा नई नई मेडिकल कॉलेज पारदर्शिता के साथ खोली जा रही है। मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना के सभी मेडिकल कॉलेज को आज नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ वर्चुअली जोड़ दिया गया है। 16 टाइप के कैमरा के द्वारा कोई फिजिकल इंस्पेक्शन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बिल में भी हम प्रावधान लेके आए हैं कि कोई नर्सिंग कमीशन के द्वारा फिजिकल इंस्पेक्शन की आवश्यकता ना हो। डेंटल कमीशन के द्वारा कोई डेंटिस्ट्री की कॉलेज का फिजिकल इंस्पेक्शन की आवश्यकता न हो। ये व्यवस्था ऑलरेडी हमने नेशनल मेडिकल कमीशन में खड़ी कर दी है। उसमें 16 कैमरा लगा हुआ है मेडिकल कॉलेज पर। ओपीडी कितनी आ रही है, पेशेंट कितने आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। रजिस्ट्री, ओपीडी रजिस्ट्री हो रही है, दिखाई दे रहे हैं। कितने पेशेंट और कितने इक्विपमेंट है, दिखाई दे रहे हैं। वहां हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारी मेडिकल कॉलेज को सूचना मिलने लगी है कि भाई आपके यहाँ ओपीडी कम हो रही है, आपकी इतनी ओपीडी होनी चाहिए, पप हो जाता है वहां पर, बढ़ाओ, लेकिन आपकी मान्यता रद्द होगी। ऑटोमेटिक वो वहां तैयारी करने लगेंगे। वहां ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हमें पता चलता है यहाँ बैठे बैठे। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बता देता है कि ये मेडिकल कॉलेज में ये टाइप की सुविधा का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कम है। ये सारी इंफॉर्मेशन, आपका इंडोर पेशेंट कम है, तो ये मेडिकल कॉलेज से डायरेक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन में इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा, जो लोग 10-15 साल से बैठे रहते थे वहां, उसके जगह पे कमीशन बनने से ये मिडवाइजरी नर्सिंग कमीशन में भी प्रावधान रखा है, डेंटल कमीशन में भी प्रावधान रखा है। केवल 4 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाए। कमीशन की मुदत 4 साल होगी, उसके ज्यादा कोई नहीं रह पाएंगे, ताकि पारदर्शिता आएगी। दूसरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप वहां एजुकेशन दिया जाएगा। आज ये प्रावधान ही नहीं है, क्लेरिफिकेशन ही नहीं है कि कौन सा काम किसको करना है। अंदर कमीशन में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। उसका नतीजा भुगतना पड़ता है हमारी डेंटल कॉलेज को, हमारी नर्सिंग कॉलेज को। नर्सिंग सेक्टर में भी ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन सर, दुनिया बदल गई है, दुनिया की रिक्वायरमेंट बदल रही है। ये बदलती रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोर्स, सिलेबस सभी में बदलाव करने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ इंस्पेक्शन की सिस्टम को बदलना है। आज एक ऐसी स्थिति मैंने देखी, एक बार मैं रिव्यू कर रहा था, तो इंस्पेक्शन करने वाले, नीति निर्धारण करने वाले और बांटने वाले, या तो एफिलिएशन कॉलेज को अप्रूव करने वाले वही होते थे। तो जो रूल्स, रेगुलेशन और प्रावधान होते थे, मैं प्राइवेट कॉलेज से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं प्राइवेट कॉलेज के हित में ही वहां जो नीतियां बने उसके लिए प्रयास करूंगा। प्राइवेट कॉलेज के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका इंफ्लुएंस वहां नहीं होना चाहिए। उसके पर उसको बैलेंस करने वाला आज कोई नहीं था। माई सेल्फ इज हेल्थ मिनिस्टर, बट मेरा कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं। एक काउंसिल तय करेगी, वो होगा। हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित तो होनी चाहिए। तो ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान और कोई व्यवस्था ये दोनों काउंसिल में नहीं थी। फिर उसको कैसे हम रिस्पॉन्सिबल करें, हम उसको कैसे स्टैंडर्डाइज करें, हम उसको कैसे बेस्ट तरीके से रेगुलेट करें, हम उसको कैसे स्वायत्त बॉडी। यहाँ मेरे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी अपने बिल के विषय के संदर्भ में अपने बात रख रहे थे, तब वो बोल रहे थे कि स्वायत्त, हम उसको वर्क करने के लिए स्वायत्ता देना चाहते, दैनिक काम में हम कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। लेकिन आज जो काउंसिल है, उन्होंने जो जजमेंट दे दिया, उसकी कोई एपेलेट अथॉरिटी ही नहीं, और कोई डिसीजन ऐसा हो गया है तो उसको बदलने की कोई व्यवस्था नहीं। आज नेशनल मेडिकल कमीशन में हमारा MARB बोर्ड कोई डिसीजन ले लेता है, वो अपनी वजह से कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा हमारा कहने का आशय नहीं है। लेकिन उन्होंने कोई डिसीजन लिया और उसके सामने किसी को कुछ कहना है, मेडिकल कॉलेज को कुछ कहना है, तो आज वो मेडिकल कमीशन के चेयरमैन के सामने अपील करते हैं। मेडिकल कमीशन के चेयरमैन से भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो मिनिस्ट्री में वो अपील करते हैं, और वहां से 3 स्टेप उसको मिल जाता है। बाद में ही उसको कोर्ट में जाने की स्थिति निर्माण होती है, ताकि कोर्ट का केस भी नहीं बढ़ता है। पहले ऐसी स्थिति थी, हर दिन हर मेडिकल कॉलेज कोर्ट में चली जाती थी। मैं आज आपको माननीय डेप्यूटी चेयरमैन सर बताना चाहूंगा, खुशी से बताना चाहूंगा, दिस ईयर
54 न्यू मेडिकल कॉलेज हमने अलॉट की है, 54 न्यू मेडिकल कॉलेज को परमिशन दी है, प्राइवेट को भी दी है, गवर्नमेंट को भी दी है, लेकिन आज कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, सब कंसेंसस से हुआ है। हमने उसको बता दिया है भाई आपके यहाँ फैसिलिटी नहीं है, हम नहीं देंगे, एकदम पारदर्शिता के साथ, कोई किसी को मिलना नहीं है। मैंने मेडिकल कॉलेज को, पहले तो ऐसा था कि मेडिकल कॉलेज लेना मतलब दूसरी तीसरी बात होती थी, हमने क्लियर किया, मैंने स्वयं ने एक बार सभी मेडिकल कॉलेज की मीटिंग करके कहा कोई किंतु परंतु की जगह नहीं है, कोई बिचौलियों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपने रिक्वायरमेंट पूरी की। हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास फैकल्टी होनी चाहिए, और तीसरा हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास पेशेंट होना चाहिए। ये तीन प्रावधान पूरा करने वाली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, आप खुशी से आइए, भारत सरकार आपको अप्रूवल दे देंगे। आज 54 न्यू मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल एक साल में दिया गया है, क्योंकि हम देश में हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ इस तरह से हम रेगुलेट करके रखें मेडिकल एजुकेशन को, नर्सिंग एजुकेशन को, डेंटल एजुकेशन को, ताकि हमारे स्टूडेंट को विदेश जाने की नौबत आए। हमारे प्रति वर्ष हजारों की संख्या में हमारे स्टूडेंट विदेश पढ़ने के लिए जाए और वहां खर्च करे, वहां एजुकेशन क्वालिटी कैसी है नहीं है उसका मैपिंग हम यहाँ बैठ के तो नहीं कर सकते हैं। और हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान यूक्रेन की स्थिति देखी, जब मुझे मेल आने लगा कि हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू हो गया है, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालिए, और मैं बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केवल यूक्रेन में ही नहीं होंगे, दुनिया के देशों में कितने हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेडिकल एजुकेशन में है, तो पता चला कि 60,000 स्टूडेंट विदेश में पढ़ रहे थे। और उसको कोविड के दरमियान और यूक्रेन क्राइसिस के दरमियान इस स्थिति में मोदी जी ने वापस लाने की एक बहुत बड़ी मुहिम ऑपरेशन चलाया और हमारे सारे स्टूडेंट को वापस लाए। तब पता चला कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे स्टूडेंट विदेश में पढ़ते हैं। क्या हम हमारे देश के युवाओं को इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते? क्या हमारे स्टूडेंट यहाँ पढ़े, हमारे ट्राइबल विस्तार के, हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट युवा उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन देने का अवसर मिले, हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले या तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हमारी युवतियों को नर्स बनने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए? और हमने लगभग ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज चालू कर दी है और आगे मेडिकल कॉलेज हम बढ़ाते जा रहे हैं। और उसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी, नर्सिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज देश में यहां बात हो रही थी कि डेंटिस्ट, ये हमारा सॉफ्ट पावर है, से हम दुनिया की सेवा भी कर सकते हैं और आजीविका भी कमा सकते हैं। हम भली भांति समझते हैं। आज हमारे केरला की नर्सिस, आज हमारे भारत की नर्सिस, आप अमेरिका में जाओ, कल्पना ही नहीं कर सकते भारत के डॉक्टर और भारत के नर्सिंग के बिना वहां का हेल्थ सेक्टर पूरा हो सकता है? जी नहीं। आज अमेरिका की 8% नर्सिस इंडियन नर्सिस है। आप गल्फ कंट्री में चले जाओ, गल्फ कंट्री में ज्यादातर हमारा हेल्थ वर्कफोर्स इंडियन है। और आप केरला में चले जाओ, केरला की जो आपको समृद्धि दिखाई दे रही है, वहां बहुत बड़ी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन लोगों का परचेज पावर ज्यादा है, क्योंकि हमारे लोग वहां से दुनिया में जा रहे हैं, नर्सिंग के रूप में, पैरामेडिक स्टाफ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दिरहाम और डॉलर में पैसा कमाते हैं और अपने वतन में वो पैसा बेचते हैं, ताकि हमें वहां हमारी समृद्धि दिखाई दे रही है। इस समृद्धि को एनकेज करने के लिए देश में नर्सिंग की संख्या बढ़े, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। हील बाय इंडिया, हम इंडिया के द्वारा दुनिया को स्वस्थ रखना चाहते हैं। हील बाय इंडिया के तहत वो दुनिया में भी अपनी सेवा दे सके, उसके लिए आज नर्सिंग सेक्टर में भी सिलेबस बदल रहा है। दुनिया की क्या डिमांड है? दुनिया में आज विश्व के यूरोपियन देश, जापान, वहां से डिमांड आती है कि हमें इंडियन नर्स चाहिए, क्योंकि इंडियन पीपल्स आर पोलाइट एंड पीस लविंग। इंडिया के लोग पोलाइट होते हैं, पीस लविंग होते हैं, और इसलिए दुनिया चाहती है कि इंडिया के मेन वर्क फोर्स हमारे यहाँ आए। जापान ने कहा कि जापानीज लैंग्वेज हमें सिखानी है,
और हमारी नर्स यहाँ से तैयार हो, जापानीज लैंग्वेज में तैयार हो। और उन्होंने आग्रह रखा कि नॉर्थ ईस्ट से हमें नर्सिंग वर्कफोर्स मिले तो अच्छा है। और मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि हमने असम की 3 नर्सिंग कॉलेज में जापानीज लैंग्वेज पढ़ाना चालू कर दिया और हमने डिसीजन लिया है कि सभी हमारी नर्सिंग कॉलेज है, वहां नर्सिंग कॉलेज में सेकंड लैंग्वेज के रूप में 5-6 लैंग्वेज हमने आइडेंटिफाई की है। ये 5-6 लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, उसमें से कोई ना कोई एक लैंग्वेज सीखे ताकि वो यहाँ से वहाँ जॉब के लिए जाए तो उसको सुविधा रहे और दुनिया की भी मांग पूरी हो और हमारे देश के लोगों को रोजगारी का अवसर भी मिले, देश में भी रोजगारी का अवसर मिले। और केवल हम मेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, उसके साथ हम देश में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि हमने मेडिकल कॉलेज चालू की है। सभी मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी हम अब मंजूर करते, 10 करोड़ रुपया एडिशनल दिया जाएगा ताकि मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी, बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी वहां स्टार्ट हो और वहां बेहतर एजुकेशन मिले। यहाँ सम्मानीय सदस्य ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारा मेडिकल नर्सिंग एजुकेशन, एलाइड हेल्थ सर्विसेज के लिए भी मेडिकल कॉलेज में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मैं भारत सरकार मानती है कि मेडिकल कॉलेज केवल मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस का ही एजुकेशन दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एमबीबीएस के साथ वहाँ नर्सिंग कॉलेज भी चले, वहाँ पैरामेडिक और हेल्थ सर्विसेज भी, ऑल टाइप ऑफ एलाइड हेल्थ सर्विसेज के कोर्स भी चले। और हमारे तंबी दुराई जी ने कहा हम तो ओपन है, लेकिन आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट नहीं करती होगी तो मैं अवश्य लिखूंगा कि संसद में ये विषय उठा है, आप आपके राज्य में एलाइड हेल्थ सर्विस का कोर्स कोई चालू करना चाहे तो अवश्य उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही मिल जाता है और हमें हेल्थ वर्कफोर्स, न्यू स्किल हेल्थ वर्कफोर्स मिल जाता है, तो हमें अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार उसके पर काम करे। यहाँ नेक्स्ट के बारे में भी बात हुई, नेक्स्ट की एग्जाम हम मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस के भी लेना चाहते हैं और डेंटल कमीशन द्वारा डेंटिस्ट्री और नर्सिंग के लिए भी लेना चाहते हैं। उसका उद्देश्य ये है, आज उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी लीगल विभाग में हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई एलएलबी करता है तो एलएलबी हो गया, लेकिन उसको एडवोकेट के रूप में जब प्रैक्टिस करनी है तब उसको एग्जाम पास करनी होगी। जब एग्जाम पास करने के बाद ही वो प्रैक्टिस कर पाएगा। वैसे आप एमबीबीएस हो गए, आप नर्स बीएससी नर्सिंग हो गए, आपको डिग्री मिल गई, लेकिन जब आपको नर्सिंग के रूप में कोई जगह पे जॉब में जाना है, आपको मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, आपको नर्सिंग की प्रैक्टिस करनी है, तब आपको नेक्स्ट एग्जाम लेनी है और नेक्स्ट एग्जाम से पास आउट व्यक्ति वहां जा सकता है और उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई एग्जाम कठिन एग्जाम ले ऐसा नहीं है। जिन्होंने जिस विषय की पढ़ाई की है उसका एक एवरेज असेसमेंट के रूप में वो लिया जाने का प्रावधान हमने किया है। ये साल में तो हमने नहीं लिया है और अगले साल में हमने एमबीबीएस के लिए नेक्स्ट एग्जाम को अभी उसकी प्रिपरेशन हो रही है, बाद में लेंगे। लेकिन एक तरह से सारा मेडिकल पैरामेडिकल एजुकेशन एक सिस्टम में आ जाए, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट हमारा नर्सिंग एजुकेशन दे पाए, हम बेस्ट से बेस्ट हमारा डेंटिस्ट एजुकेशन दे पाए। मैं अपेक्षा करता हूं कि दोनों बिल आने वाले समय की मांग को पूरा करने के लिए है। मेडिकल एजुकेशन का हमारे देश की वर्तमान रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, देश की भविष्य की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। क्वालिटी एजुकेशन हमें हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड करना है, स्थापित हितों से देश को मुक्ति दिलाना है। एक पारदर्शी एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में हो, उसके लिए जो हमने बदलाव शुरू किया है उसकी श्रेणी में ये तीसरा और चौथा बदलाव है। फार्मेसी कमीशन भी 5वां बदलाव के रूप में आएगा, ताकि एजुकेशन की सिनर्जी बनी रहेगी,
पारदर्शिता से इस सेक्टर में एजुकेशन होगा, कोई बिचौलिया और किसी की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होगी। एक बैलेंस एजुकेशन यानी कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपील की दी जाएगी, ताकि उसकी कोई बात को रखना है तो अवश्य रख पाए। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ असेसमेंट करना है, ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम से कम करना है, ताकि एजुकेशन सचमुच एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा एजुकेशन बने और दुनिया में ये छवि होनी चाहिए। आज मुझे प्राउड है, हम सबको प्राउड है, इंडियन डॉक्टर है, दुनिया रिगार्ड करती है। दुनिया को हेल्थ वर्कफोर्स चाहिए तो पहला वो अप्रोच करे इंडिया को कि इंडिया से हमें नर्स मिल रही है, इंडिया से हमें डेंटिस्ट मिल रहा है, इंडिया से हमें डॉक्टर मिल रहा है, इंडिया से हमें अलाइड हेल्थ सर्विस फोर्स मिल रहा है, तो पहली प्रायोरिटी दुनिया के लिए इंडिया होनी चाहिए। ऐसा एजुकेशन स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम नर्सिंग कमीशन और डेंटिस्ट कमीशन बिल लेके आया है। एक के बाद एक बिल में आपके सामने रखूंगा और मैं विश्वास करता हूं, मुझे श्रद्धा है कि यूनानिमसली हम बिल पास करेंगे। I shall first put the motion regarding consideration of the National Dental Commission Bill 2023 to vote. The question is that the National Dental Commission Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Dr. V. Sivadasan. Member absent, amendment not moved. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment, number 2 by Dr. V. Sivadasan. Member absent, amendment not moved. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 to 11 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 5 to 11 are adopted. Clause 12 stands part of the bill. There is one amendment, number 3 by Dr. V. Sivadasan. Member absent, amendment not moved. I shall now put clause 12 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 12 is adopted. Clauses 13 to 59 and the schedule stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 13 to 59 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Dr. Mansukh Mandavia to move that the bill be passed. सर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नेशनल डेंटल कमीशन बिल को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. I shall now put the motion regarding consideration of the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023 to vote. The question is that the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill.
Clauses 2 to 57 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 57 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Dr. Mansukh Mandavia to move that the bill be passed. सर मैं प्रस्ताव करता हूं कि नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन बिल 2023 को पास किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Special mention. Dr. Sushil Kumar Modi, subject concern over increased cases of suicides among students. मैडम, मेरे स्पेशल मेंशन का सब्जेक्ट है concern over increased cases of suicide among students. In 2021, there have been 10,732 suicide cases of students below the age of 18 years. It depicted an increase of 4.5% from the previous year. In the last 5 years, 75 students have committed suicide in IIT, IIM, AIMS, and other top premier institutions. These cases have been increasing at a concerning rate. In Kota this year, police have reported more than 15 suicides. The high number of suicides reflects the severe mental and physical stress the students go through to secure college admissions in the premier universities. The students face severe academic stress and develop mental health issues because of the intensive competition in the medical and engineering examinations. Factors like low self-esteem due to poor scores in examinations at the coaching centers, pressures of parental expectations, financial constraints, and the stigma around poor performance contribute to the students constantly deteriorating mental health. The consequences of relentless academic pressure are extremely concerning. Thus, I request the government to, to, to develop a comprehensive suicide prevention mechanism and implement the same in mission mode to harness the results at the earliest. The government should take a proactive initiative to enhance mental health support within coaching institutes, schools, and universities. The number of counselors available should be increased, and a mechanism should be developed to communicate properly between the students and the counselors. There should be awareness campaign targeting teachers, parents, and students. Increased awareness among the public will help in early identification and treatment of suicidal tendencies. I urge the government to look into the matter. Thank you, sir. Srimati J.B. Mather Hisam. Absent. Srimati Mamta Mahanta. Speak in Odia. ମହୋଦୟା, ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲେ। ସକାଳୁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଯାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ପୁରୀ ଠାରୁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିକୁ ଆସିଥାଏ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 12891 ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ପୁରୀ ଯାଇଥାଏ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 12892 ପୁରୀ ଠାରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଆସିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯଥା ଚାକିରିଆ, ଶ୍ରମିକ ଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏ ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେବେ ମହୋଦୟ, ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ ପୁରୀ ଠାରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରତିଦିନ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଯାଉଛି।
पुरी ठारू अपराह्न 4:20 रे छाड़ी भुवनेश्वर को 5:25 रे पहुंचे सेठारू 5:30 रे छाड़ी थाए हेले एही ट्रेन पुरी ठारू बाहरिबा 2-3 घंटा विलंब हेउची फल लोके बहुत हैरान होउचंती बांगरी बसी पहुंचवा बेलू राति 2टा हो जाउची रेल कर्तृपक्ष एने गुरुत्व देउ नाहंती तेणु एही पवित्र गृह रे मोर अभियोग रखिची आपणक माध्यम रे मोर अनुरोध रेल विभाग एप्रति दृष्टि देई लोकंक सुविधा पाई ठीक समय रे ट्रेन चलाचल करिवो बोली आशा करूची धन्यवाद Thank you. Sri Muhammad Abdullah. I lay on a table. Kindly permit to lay on the. I lay on the table. Thank you. Thank you. Thank you. Sri A.D. Singh. Not present. Sri Muhammad Nadimul Haq. Not present. Sri A.A. Rahim. Not present. Sri Vijaypal Singh Tomar. वैसे तो मैंने सेक्रेटरी साहब को बताया भी था मैंने विषय दिया था कि मेरे जिले में 3.37 मीटर जल स्तर नीचे चला गया है और पूरे पश्चिम की यह हालत है लेकिन मेरे को दिया वो जो मैंने पहले 0 आवर में उठा दिया कहा कि अब तो यही बोलना पड़ेगा तो महोदय मैं दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों के प्रदूषित जल पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यमुना नदी काली नदी हिंडन का जल स्तर स्लॉटर हाउस चीनी मिल पेपर मिल डिस्टिलरी प्लांट केमिकल कारखानों के प्रदूषित जल से इन नदियों का पानी जहरीला हो गया है यह अपने समीपवर्ती सैकड़ों गांवों में कैंसर की बीमारी का कारण बना हुआ है काली नदी में जहां भी सैंपल लिया गया वहां ऑक्सीजन की मात्रा शून्य पाई गई जबकि टीसीओ 2,80,000 और वीडियो की मात्रा 40 पाई गई केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस नदी के पानी में पारा कॉपर जिंक आर्सेनिक व फ्लोराइड नाइट्रेट की मात्रा भी बहुत अधिक है स्पष्ट है कि काली नदी का पानी पीने लायक तो है ही नहीं साथ ही सिंचाई या किसी अन्य काम में आने लायक भी नहीं है और ऑक्सीजन खत्म होने से जलीय जंतु भी गायब हो गए हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर काली नदी के किनारे चिकित्सा कैंप लगाए गए जिसमें पाया गया कि नदी के समीपवर्ती गांवों में कैंसर तथा अन्य बीमारियां जैसे पीलिया है पेचिस है हैजा है और चर्म रोग की बीमारी बढ़ती जा रही है पीड़ितों की संख्या राष्ट्रीय मानकों से काफी अधिक है जो कैंसर पीड़ितों की है मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि जन स्वास्थ्य को देखते हुए दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे निपटने हेतु सख्त प्रभावी कदम उठाया जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों के जीवन के साथ हो रहे स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सके धन्यवाद Thank you. Sri Santosh Kumar P. Not present. Sri Sakaldeep Rajbhar. माननीय आपने इस स्पेशल मेंशन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सदन के माध्यम से मैं स्पेशल मेंशन के तहत लोक महत्व के अति आवश्यक विषय को रखते हुए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित जनपद बलिया में किसान सहकारी गन्ना मिल रसड़ा कताई मिल रसड़ा व जनपद गाजीपुर में पूर्वांचल कताई मिल बहादुरगंज और जनपद मऊ में स्पिनिंग कताई मिल परदहा में स्वदेशी काटन मिल मऊ उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा संचालित की जा रही थी जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा था ये सभी उद्यम इन दिनों बंद हो चुके हैं मिल बंदी के कारण सभी कर्मचारी बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं माननीय महोदया जी मैं इस विषय को सदन में 15/3/2021 को शून्यकाल के तहत उठाया था यहाँ के गन्ना मिल बंद होने और आसपास कोई दूसरा मिल न होने के कारण यहाँ के किसान काफी परेशान हैं किसानों के लिए गन्ना की खेती नकदी फसल के समान होता है जिससे किसान अपने बच्चों की शिक्षा शादी विवाह तथा अन्य प्रयोजन के लिए करते हैं लेकिन गन्ना मिल बंद होने से यहाँ के किसान
गन्ने की खेती ही बंद कर दिए। इन सभी मिलों को चालू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 873 करोड़ रुपए मंजूर हुआ, लेकिन यह राशि अभी तक रिलीज नहीं हुई। अतः आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सभी मिलों को चालू करने में आर्थिक मदद करें और राज्य सरकार को भी स्वीकृति राशि निर्गत करने के लिए आदेशित करें, तथा इसके अलावा मेरा सुझाव है कि अगर उक्त मिलें चालू नहीं हो पाती हैं तो ऐसी सूरत में उक्त मिलों के भूमि पर सक्षम व्यापारियों को उपलब्ध कराकर व्यवसायिक केंद्र बनाया जाए, जिससे उन जिलों के गरीब जनता को रोजगार मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जयंत चौधरी, नॉट प्रेजेंट। श्री ब्रिजलाल, श्री ब्रिजलाल। जी जी। Thanks, Vice Chairman, Chairperson, Madam, for giving me opportunity to speak on my special mention. My subject is demand for removal of restriction on movement of four-wheelers on Indo-Nepalese border Aligarhwa checkpost. It has been ascertained that there is an Indian checkpost at Aligarhwa, Siddharth Nagar district, UP, on the Indo-Nepal border on the Indian side, and similarly on the other side there is a Nepalese checkpost. It has been noted that only two-wheelers can ply between these two checkposts. In the absence of movement of commercial vehicle, trade does not take place due to these vehicular restrictions. These restrictions cause negative economic development of this area. It is also to be worthwhile to mention that earlier bullock carts used to ply on the route before these restrictions came in force, and usual commercial activity were going on unhindered. I urge through you to Honorable External Affairs Minister to make effort to remove restriction on the movement of commercial vehicle between these checkposts. This gesture will improve the economic life on the people of the area. Thanks, madam. Thank you. Sri Hise Lachungpa, not present. Sri Bhubaneswar Kalita. Thank you, Madam Vice Chairperson, for giving me the opportunity to raise a very important issue on health, of all of our health through special mention. And my subject is need to adopt front of the pack labeling regulations, ensuring warning levels on high fat, sugar and salt foods. Madam, India is facing a huge burden of diseases such as diabetes, heart diseases, and cancers. 1 out of 4 adults in India is either diabetic or pre-diabetic, according to the latest study. These diseases are responsible for more than 60% of the total deaths in the country, and many are preventable. One of the major reasons of rising number of diabetes and other diseases is because of increasing consumption of junk food, high fat, sugar and salt foods and beverages, according to WHO scientific studies. In India, the sale of such unhealthy foods is growing by 19% annually. Sales of food and beverages are shrinking in the West, and companies are descending into emerging economies and targeting vulnerable populations and the children. India needs to come up with strong front of the food pack labeling policy on HFSS foods that can reduce their consumption.
The WHO has recently called upon the governments to formulate strong policies that would decrease the consumption of such unhealthy foods. One such FOPL policy is to mandate warning labels as FOPL on HFSS foods that are already defined in the draft regulation. The WHO SARO's thresholds can be used too. This is the only policy that works and is backed by the global and national evidence. I urge upon the government to urgently adopt strong FOPL regulation to ensure mandatory warning levels on the high fat and sugar salt foods. India can demonstrate global leadership to protect its people from harmful HSF marketing like effectively done in the case of marketing baby foods and tobacco. Through you, madam, I request the government, demand the government to take appropriate action on making strong FOPL regulations, ensuring high-fat sugar salt foods, and do whatever is necessary. And I would have been present if Health Minister was present here today, because this is a very important subject affecting everyone's health. Thank you, madam. धन्यवाद. श्री गुलाम अली. Thank you, Deputy Chairperson, ma'am. This is to bring to your kind consideration that certain taxpayers are facing some income tax related hardship on account of non-deposit of tax deducted at source to government account, why tax deductors, which does not come to the notice of Central Processing Center of the Income Tax Department. And when the SSC approaches the jurisdictional income tax officer with such problem, the jurisdictional officer expresses his inability to take any action against the defaulters, claiming that income tax officer cannot do unless the same comes from CPC. In one such instance, the TDS of a taxpayer was deducted by a government corporation, Jammu Municipal Corporation, but does not deposited during the relevant year in Jammu and Kashmir. The assessee had offered his correct income for tax to the Income Tax Department and calculated proper taxes. Credited to TDS was not received on account of non-deposit of the tax deducted by the deductor. As a result, the department served the person demand notice of the amount of tax which was deducted out of the income of the person, but was not deposited by the said government corporation during the relevant year. Same may be done with the other assessee by various departments, corporations across India. I therefore urge through you to government to seek data on such complaints and redress them. Thank you. धन्यवाद. श्री अयोध्या रमी रेड्डी अल्ला. Thank you, madam. This is an important subject on coal during high electricity demands being burnt. Madam, based on government data, Reuters reported that India experienced its most substantial growth in power generation in over 30 years during the previous fiscal year, with coal-fired plants recording a 12.4% surge in electricity production, leading to a notable rise in emissions. The surge in power demand, driven by intense summer heat waves and other contributing factors, compelled India to boost its power output from both coal and solar facilities to avoid power shortages. Indian power plants in the new fiscal year are expected to burn about 8% more coal, according to the report. The rapid acceleration in India's coal-fired output to address increased power demand remains a significant hurdle
as we have committed to reducing our carbon emissions. As climate change is likely to accelerate the impact of heat waves, addressing increased electricity demands while also reducing the share of coal in power mix will be a recurrent challenge and must be tackled effectively. Therefore, I request the government to take measures towards renewable energy diversification and increasing the renewable energy generation capacity to tackle the increased power demand. This would ensure we stay on the right path regarding our sustainable development commitments and successfully end our coal dependence. Thank you, Madam. Thank you. Sri GVL Narasimha Rao. Thank you, Madam. My special mention is about the need to establish a national building and construction workers fund by amending the relevant acts. As per, Madam, as per the Building and Other Construction Workers Act, 1% cess is collected by the labor departments of state governments from builders of construction projects. The money so collected is to be transferred to state construction workers boards for the welfare of the workers. As high as 5.06 crore building and construction workers are registered with various state construction workers boards. They are entitled to receive several welfare benefits for educational assistance, marriage, maternity benefits, medical assistance, death in family for differently abled members, and for housing grants. Several lakhs of such claims are pending in state workers' boards, though their state governments have thousands of crores of collected funds lying unutilized. The central government has asked the state governments repeatedly to use these funds during the COVID period, but in vain. I appeal to the government to amend the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act 1996 and the Building and Construction Workers Act to establish a national construction workers fund from the cess collected under these acts and distribute the same to workers via DBT, direct benefit transfer mode, as in the case of other central schemes like Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Thank you. Thank you. Thank you. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 9th August 2023. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.